यार इंटर्नशिप से तो Hi, good evening, everybody. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on ARYAN Tutorials. कैसी चल रही है आपकी तैयारी? How's your preparation going? कैसा चल रहा है सब कुछ? Hi, Samar. Anju Suman is saying not that great. Why so? I think अभी तक तो आपका मेजॉरिटी काम हो ही चुका होगा. सर अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको मिठाई खिलाऊंगा. पक्का पक्का डन. आसनसोल आ रहे हो ना? Okay, so today's agenda is basically, someone is asking what is today's agenda. Today's agenda is discussing the compartment paper of 2025. Specimen paper, I presume कि आपने कर ही लिया होगा अभी तक. So, and besides, last year I had already put out the answer key for the board paper 2025. So, I don't need to separately discuss that once again. If you want, you can just check out the answer key of the last year. ठीक है? Whatever I had given was absolutely correct. अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका कंपार्टमेंट पेपर का डिस्कशन. पोस्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू द प्री बोर्ड्स MCQ questions of different schools which I have compiled all together from all the resources. See, I don't want to give out my questions for free because I take a lot of effort in making those questions. So we had already discussed pertaining to those good quality question in Nirbhay and in sample papers and all, but जितना हो सकेगा मैं आपको resources provide करने का कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है? कंपार्टमेंट क्या होता है? बेसिकली जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन होता है ना, लाइक आपका अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ अच्छा, सो आपकी कंपार्टमेंट आ गई, या इफ यू डिड नॉट मैनेज टू पास इन योर एग्जाम, तो उसमें आपके कंपार्टमेंट आ गई. एंड या तो इम्प्रूवमेंट पेपर है, आप उसको देते हो, उसी को लेके हम लोग डिस्कस करेगा. सो ये 2025 का इम्प्रूवमेंट पेपर है. ठीक है? कंपार्टमेंट पेपर है. सो लेट्स डिस्कस एंड हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चन. सर वो बोर्ड से इजी होता है, मतलब ठीक ही है, बोर्ड जैसा ही होता है. इट इज लाइक अ सेकंड चांस इफ यू वांट. आप खुद देख लो, स्टैंडर्ड आपको अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है? यू गो थ्रू योर ओन सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड. You should definitely always start your paper from section C first, followed by section B, and then lastly section A. That is how your order is to be. Always go for section C because comparatively the questions are on the easier side. थोड़ा आसान आता है, आपका गलती होने का चांसेस कम होता है. Then go by section B, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करिएगा, and then lastly followed by your completing by your MCQ and section A. ठीक है? So that leaves a very good impression on the teacher. इंप्रूवमेंट को लेके क्या हम लोग बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, अभी फिलहाल क्वेश्चंस देख ले. ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ. एमसीक्यू. द इनडिफरेंस कर्व शोन अबव इज अनयूजुअल. व्हाई? यहां पे इनडिफरेंस कर्व कैसा दिख रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ इनडिफरेंस कर्व ओवर हियर? द शेप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव. और क्या कभी भी इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता है? नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है. बट क्या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इज इट पॉसिबल फॉर एन इंडिफरेंस कर्व टू बी कॉनकेव? यस, इट इज पॉसिबल when your MRS, that is your marginal rate of substitution, is increasing. ठीक है? IMRS हो यानी increasing marginal rate of substitution हो, that is in order to have more of x, y को सैक्रिफाइस तो किया जा रहा है बट इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, x बढ़ाते वक्त y को डिक्रीजिंग प्रपोर्शन से सैक्रिफाइस करते हैं.
बट अगर हम लोग y को इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से सैक्रिफाइस करें देन indifference curve can be concave. So it will be option B, the marginal rate of substitution is increasing. ठीक है, is that clear? सर डायग्राम का क्लास कब होगा? डायग्राम का क्लास आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू टेक एनी मोर बिकॉज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ऑल द डायग्राम. सो देखते हैं इफ अ लॉट मेनी पीपल रिक्वेस्ट मी इफ यू वांट मी टू टेक अ डायग्राम क्लास मे बी टुमारो, अदरवाइज आई थिंक वी आर गुड टू गो. कल का दिन मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ना चाहूंगा. इफ नीडेड रात में एक बार आएंगे, डायग्राम कर लेंगे. इफ नीडेड ओनली देन. हमने ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, डायग्राम का क्लास उनको चाहिए होता है जो लोग साल भर कुछ नहीं पढ़ाते हैं. हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है साल भर. नेक्स्ट, Rashi is a manufacturer of water bottles. She realizes that stage 3 of the law of variable proportion has started in the production process when? When? Stage 3 कब शुरू होगा? Stage 3 means stage of negative return. राइट, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. नेगेटिव रिटर्न के दौरान क्या होता है? टीपी स्टार्ट्स टू फॉल, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल बट remains positive throughout. Remember that AP can never be equal to 0 or negative because TP can never be equal to 0 or negative. So क्या हो जाएगा इसका? क्या total product of bottle falls and average product rises becomes incorrect? Average product of bottle begins to fall become incorrect. Begin नहीं होता है, it is already falling. It begins to fall in the stage 2 itself. Total product of bottle falls and average product continues to fall. Yes, average product continues to fall. एकदम सही है. ठीक है, continues एकदम सही है. And marginal product of bottle begins to fall. Begins to fall? No, 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 no. It goes negative. So option C is your करेक्ट ऑप्शन. सर बट कभी सेक्शन सी से स्टार्ट नहीं किया, कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं होगा बेटा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा, डोंट वरी. पहले आप पढ़ लीजिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा. पढ़ाई किया नहीं, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए लास्ट में. Which one of the following can be regarded as a capital expenditure for the government? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? केपेक्स क्या होता है? केपेक्स वो होते हैं जो सरकार का या तो लायबिलिटी कम करे या तो फिर एसेट्स को इंक्रीज करे. ठीक है, केपेक्स इज दैट व्हिच ब्रिंग्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी और एन इंक्रीज इन द एसेट्स. सैलरी हाइक फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल. सैलरी हाइक फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या ये सैलरी हाइक, हाइक इन सैलरी या सैलरी को ही पकड़ लो, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो ए इज इनकरेक्ट. Reward of 1 crore by the government to all the medal winners at the Olympics. Reward prices क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कुछ भी लाइबिलिटी एसेट्स के साथ एसोसिएटेड है? नो, सो इनकरेक्ट. ट्रांसफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया. एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20 crore by government as interest payment. Again, interest on loan is a revenue expenditure. An expenditure of 500 crore by government on the construction of पक्का रोड. रोड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एसेट फॉर द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट. So D is your correct option. Is that clear everybody? D is your correct option. Perfect. Very good. Is that clear? सर पब्लिक डेट क्या है? बेसिकली जो लोन्स लेता है सरकार उसको पब्लिक डेट बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिनेशन को याद करिए. डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एक्सेस. क्या चीज का एक्सेस? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर revenue. And how is that gap bridged? By printing of new currency. When there is an excess of expenditure over revenue, that gap is bridged by printing of new currency. So borrowing from the RBI through the issue of new currency is your deficit financing. Is that clear? Perfect, perfect everybody. चलो आगे बढ़े. Next, Sandeep sells a mixer grinder for 8,000 rupees. कौन सा करेंसी को एक्सेप्ट करेगा? वेरी फुद्दू क्वेश्चन दिस इज. इमेज ए और इमेज बी हम लोग क्या जानते हैं? 1 rupee नोट एंड एनी कॉइन्स आर लिमिटेड. दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर. एंड जितने भी नोट्स होते हैं, पेपर करेंसी होते हैं, दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. सो विदाउट एनी अपर लिमिट उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. सो कौन सा हो जाएगा? करेंसी डिपिक्टेड इन इमेज बी एज दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. ठीक है, इज दैट क्लियर?
आई होप दैट इज क्लियर। चले आगे बढ़े। Look at the demand curve. Price of a commodity in quantity demanded. Which of the following situation is represented by above demand? What is this? This is violation. This is violation of LOD, law of demand. This is an abnormal demand curve. कौन से केस में होगा? Ali starts using shampoo, silky hair as the price of the shampoo. Shiny hair has increased. अगर सब्सटीट्यूट गुड होता तो क्या ऑप्शन ए होता? नहीं। तो इस केस में क्या देखने मिलता? शिफ्ट देखने मिलता। अगर शाइनी हेयर का प्राइस बढ़ जाता, शाइनी हेयर का प्राइस बढ़ता तो सिल्की हेयर का डिमांड का इंक्रीमेंट देखने मिलता, मतलब शिफ्ट देखने मिलता। ठीक है, ये जबकि वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ए के केस में हमें ये देखने मिलता, राइटवर्ड शिफ्ट देखने मिलता। ठीक है, डिमांड वुड हैव इंक्रीज फ्रॉम डी टू D1. Vedika purchases many dresses of a renowned brand despite the price rise. B is your correct option. Despite the price rise, Vedika purchases renowned brand. Why renowned brand? Renowned brand to show off. To show off. Zenat purchases laptop when her income rises. क्या यहाँ पे income दिया हुआ है? No, eliminated. John purchases two watches as the brand offers a discount on the product. Discount होता तो प्राइस तो घटना चाहिए था, मतलब डिस्काउंट के केस में एक्सपेंशन देखने मिलता। ठीक है, डिस्काउंट के केस में एक्सपेंशन देखने मिलता, ए से बी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिलता। So that is also eliminate. So B is your correct option. Am I clear everybody? Am I clear? क्या आपको समझ आ रहा है कैसे होगा? समझ आया ना क्या बोला? कोई अगर इस पेपर में भी फेल हुआ होगा तो उससे मेरी बद्दुआ। व्हाट रबिश। क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। दिस इंप्लाइज, क्या बताता है? क्रेडिट को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का एक बहुत जरूरी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? व्हाट इज द पर्पस? क्रेडिट कंट्रोल का पर्पस क्या है? पर्पस या फिर एम क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, राइट, वेरी गुड। सो बेसिकली रिडक्शन एंड एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, दैट इज द मेन फंक्शन। वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों करता है वो लोग क्रेडिट का। इज दैट क्लियर? इजी पीजी। चले आगे बढ़े। गिवन बिलो आर द टू असर्शन रीजन। Depreciation of Indian currency leads to rise in exports to Britain. Depreciation leads to more purchase of goods from India with the same amount of pound. सोच समझ के दीजिएगा BOP. Depreciation क्या होता है? If $1 was equal to 60 and $1 becomes equal to 80, that is a depreciation for us. So what is going to happen? अगर इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट हो गया तो क्या हमारा एक्सपोर्ट्स प्रॉफिटेबल बनेगा? क्या हमारा एक्सपोर्ट्स प्रॉफिटेबल बनेगा? हाँ बनेगा। क्या हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? हाँ बढ़ाएंगे। सो असर्शन तो ट्रू है, सही बात है असर्शन को लेके। रीजन दिया है, डेप्रीसिएशन लीड्स टू मोर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ पाउंड। आप डॉलर ही पकड़ लो। मोर परचेज ऑफ गुड्स, क्या इंडियन डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी लीड्स टू depreciation leads to more purchase of goods from India. क्या इंडिया से और ज्यादा गुड्स लिया जाएगा? हाँ लिया जाएगा ना इंडिया से। अगर पहले आपको $1 के बदले 60 रुपए का गुड मिलता था और अब $1 अगर 80 हो गया है तो आपको 20 रुपए का तो गुड ज्यादा मिल रहा है ना, तो परचेज तो किया जाएगा ना इंडिया से। सो बोथ assertion reason is true but the reason is not the correct explanation. क्योंकि आपसे रीजन पूछा है, रीजन इसका क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। क्यों?
because export becomes more profitable in terms of Indian currency. That is why reason होना चाहिए था आपका exports becoming more profitable. But यहाँ पे depreciation leads to more purchase of good from India with the same amount of pound is absolutely correct. But यहाँ पे conceptually it is not right assertion के साथ. So B is correct option. Is that clear? With the depreciation of currency, will in the long run India be exporting or willing to export a larger quantity of good? Yes, it will be. Supposedly $1 was 60 becomes 80. So for India, exports becomes more profitable. So they would like to sell more to abroad. That is why assertion is correct. Is reason correct? Yes. Do Indian goods after depreciation of rupee, do they become cheaper? Yes, it does become cheaper. Like for instance, if $1 could purchase 60 worth rupees of Indian good earlier, and now Indian rupee depreciate, and we are getting 80 rupees against $1, that means we are getting 20 rupees extra. ठीक है? Got it? Got the English explanation? So B is your correct answer. Can we proceed now? Claudia Reela. Chaliye. Given below are the two statement assertion reason. Again, the short run average cost curve is U-shaped. Is short run average cost curve U-shaped? Is SAC U-shaped? Yes, it is. The law of return to a scale operates in the short run? No. Does the law of return to a scale operates in the short run? No. Law of return to a factor operates in the short run. So assertion is true, but the reason is false. Take care. Assertion is true, but the reason is false. Is that clear? Let's proceed. State one difference between decrease in supply and contraction in supply. What would be expected out of you to give meaning as a difference? And if you can give a diagram, nothing like it. What is decrease in supply? When less quantity is supplied at a same price. When less quantity is supplied at a same price means price remaining unchanged when quantity supplied decreases. That is a leftward shift. And what is contraction in supply? When at a lower price less quantity is being supplied, right? P0, P1. At a lower price less quantity is being supplied. Price decreases, supply decreases, assuming other factors remaining constant, we say that is a contraction in supply. Is that clear? Eid Mubarak ji aapko bhi. Got it? Let's proceed now. The demand for labor in a particular city increases due to expansion of tourism business. In this situation, the demand for labor is a derived demand. Justify the statement. Why is the demand for labor in the tourism industry increasing? Think, why is it a derived demand? Justify it. Because of the rise in demand for tourism, because of rise in demand for tourism, there are more laborers which are required to undertake more construction work maybe, or even as tourist guide maybe, and that is why the demand for labor increases. Is that clear? So the demand for laborers are indirectly derived from the demand for the tourist one. I hope that's clear. Sir, আপনি ভালো আছেন? Yes, আমি খুব ভালো আছি। ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। চলো। Mumtaz was offered a job of a package of 1 crore per annum, but she declined it and launched her startup investing 50 lakh. Identify the opportunity cost and the accounting cost in the above situation. Startup by investing 50 lakh. What is the accounting cost? 50 lakh is your 50 lakh is your accounting cost, and 1 CR is your opportunity cost. ठीक है? 1 crore is your opportunity cost and 50 lakh is your accounting cost. Is that clear? Next one.
Under perfect competition, marginal revenue is equal to price of the commodity. Defend or refute the statement. Kya under perfect competition, price is equal to marginal revenue? Yes, indeed it is. The above statement is to be defended. Why price is equal to MR? Because prices under perfect competition are given and every additional output is sold at a same price. Therefore, price is equal to marginal revenue. Every additional output is sold at same price. So, price is equal to marginal revenue. Is that clear? There, as the tourism will boost, 1 second, play the guitar, I'm explaining. As the tourism industry will boom, there will be requirement for more hotels, for more infrastructure, for better road, for better connectivity, for better transport. Automatically, the demand for labor class people for that progress and development in that particular area where the tourism is booming will be high. Since the demand for tourism industry is increasing, so will your demand for laborers who can undertake those work. Is that clear now? चलिए आगे बढ़े. Next, increase in repo rate and reverse repo rate reduces the credit creating capacity of the commercial bank. Do you agree? Give a reason. Does it reduce the credit creating capacity of the commercial bank? Yes. Do you agree? Yes, I do agree. Because if not CRR, sorry, if the repo rate is increased, what is the meaning of repo rate? Repo rate is the ROI. ठीक है? Both repo rate and reverse repo rate is the ROI. So for repo rate, what happens is that it is the rate of interest at which central gives loans to commercial, and commercial will be giving interest in future. If central is giving loans to commercial, that means commercial will be giving interest in future. So if repo rate is increased, in that case commercial will have to pay higher interest to central in future. They'll get discouraged and they will stop borrowing. ठीक है? But what happens in case of reverse repo rate? In case of reverse repo rate, it is the rate of interest at which central takes loans from commercial. So basically commercial gives loans to central and central will be paying interest to commercial in future. So if that is increased, if interest on reverse repo rate is increased, that means commercial are getting better returns in future by central, so they can park their fund with central bank right now and they will not be in a position to give out loans to public, so inflation is wiped out at the present. Is that clear? Right now what we are discussing, let's focus on that. Your doubts can be taken up later on, my dear. Next one, what is meant by high powered money? That's a direct question, I think you all will be able to handle. High powered money is basically the money which is issued by the central bank. Since central bank is the monetary base, and all the money that originates from central bank is regarded as high powered money. Is that clear? Yeah, prime cost is AVC. You are correct. Next one, milk has been a major item of export by India, but now vegan products are gaining popularity across the globe, replacing the demand for milk. How does it affect the balance of payment of India? Milk was a major item of export. Now, where this has come from? This has come from the causes of adverse BOP. If you decode it properly, it has come from the causes of adverse BOP and demand for milk जो है ना, fall in foreign demand. If you remember the point, fall in foreign demand wala point is this particular point. So if there is a fall in foreign demand, what is going to happen to exports of India? Indian exports are going to get discouraged. Imports तो उतना का उतना ही है. So imports become greater than export and that leads to a deficit BOP. ठीक है? Or it leads to adverse BOP. Am I clear? Am I clear? Yes, perfect. Understood, decoded. Let's proceed now. It's pathetic the way people are going away. I think
पीपल वांट टू रिलाई मोर ऑन सेल्फ स्टडी नाउ. तो तुम बेकार का ही लाइव लिया, आप खुद ही पढ़ लेता उससे अच्छा. चलो. इन इंडिया, young professionals and college students prefer visiting places like cafe coffee day, Starbucks, Costa Coffee, etc. This has led to expansion of coffee culture in India. Explain how the market demand for coffee will be affected in the above situation. Illustrate the same on the diagram. What is going to happen? What is going to happen? Yes, very good. Demand is going to shift to the right. Since coffee culture है, custom है, taste and preference के साथ associated है, so demand is going to experience a rightward shift. ठीक है, demand is going to experience a rightward shift. Q0 to Q1. Is that clear? Market demand is going to increase. Love you, sir, for helping in English. Thank you so much. The price of a commodity decreases by 5 per unit, due to which the demand increases from 100 to 150 unit. If the price elasticity is 1.5, calculate the original price of the commodity. You have to calculate P0. Price of the commodity decreases by means delta P has been given as 5. Quantity is 100 unit. Q0 is 100 and Q1 is 150. Elasticity is 1.5. What do we know? We know that elasticity is change in quantity by original into price by change in price. So 1.5 is equal to change in quantity is 50 by original is 100 into original price is something that we have to calculate, and change in price is by 5. How much does this become? 2 5s are 10. 10 into 1.5 will be 15, will be original price as far as I presume. Yes? फिर भी मैं कर लूँ. I have trust issues with mathematics. Yeah, 15. So P0 will be 15 is your answer. Although I know it, but still I have trust issue with maths. Is that clear? Chali, let's proceed. Answer the following question. Calculate marginal cost from the schedule given below. What I had taught. What did I teach? Marginal cost is change in TCN minus TCN minus 1 or TVCN minus TVCN minus 1. So how much is the change in TVC? What should be your MC? MC will be first will be nil. Why? 0 level से शुरू हो रहा है. That's why 10 minus 0 will be 10. साथ साथ बोलते जाइए. Will you discuss CFQs tomorrow? I think other teachers are taking that up. So what is my need then? People can go and watch. Let's be collaborative. 13 minus 10 is 3, 15 minus 13 is 2, and 16 minus 15 is 1. Is that clear? Most important question. Acha, theek hai. Fine, fine. I will give you most important question after this. After I finish this specimen, then I'll give you the most important question. And with a promise, if that comes in your board examination, you are not going to make a big deal out of it. At the same time, that is only the most probable ones. There might be a possibility, it might not even be tested upon. Or teachers are much more smarter, जो हम लोग सोच रहे शायद वो उसके विपरीत कुछ दे दे. So you will not blame me for that. The important things which I will give, you will only stress upon those areas very well, so that if they come in your paper, which I'm sure it should, that much amount of teaching experience I have been teaching for more than 9 years now. Like, it's been a decade now, 10th year is running. So wo to aayega, but then it is not that you will just rely on those important topics only, then I will give it, otherwise I will not give it. I do not appreciate all that. Take care. Chalo. What will be the impact on equilibrium price when the supply changes but the demand is perfectly inelastic? Illustrate it on the diagram. Kya hoga? This is your special case, right? This is your special case. If
demand is perfectly inelastic. This is a perfectly inelastic demand. And if supply changes, this is my initial supply, point E, equilibrium price, equilibrium quantity. Supply changes का मतलब क्या हो गया? Either supply shifting towards the right, in that case equilibrium price decreases from E to E1, and supply, if it decreases from S to S to S2, in that case equilibrium price increases. Am I clear? चले आगे बढ़े. The equality between MR and MC is not enough to ensure the equilibrium of a firm. Justify. Why is it not enough? Why is it not enough? Because alongside MR is equal to MP, what is sufficient? What is sufficient? This is only first condition which is satisfied. Equality between MR and MC is a necessary condition, right? This is a necessary condition. What is the sufficient condition after equality? The sufficient condition is that MC, what is the sufficient condition? MC should cut MR from below. Equality between MR and MC is a necessary condition. No, 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 no. Where MR is equal to MC, वहां break even नहीं होता है. पता नहीं आप लोग कहां से पढ़ लिया है ये सब. There is no break even when MR is equal to MC. I have already explained that. नहीं होता है, ठीक है? MC should cut MR from below. Next, state the two differences between short run production function and long run production function. Direct question हो जाएगा. Short run production function is supposed to tell you the relationship between functional relationship between output and input, where only one input is assumed to be variable, remaining all are fixed. Long run production function is supposed to tell you the functional relationship between output and input, where all the inputs are variable and can be changed simultaneously. Is that clear? Mary teacher has given same paper copy pasted in our pre-boards. That's sad. Teacher shouldn't be doing all this, but it's okay. Some of the leading cement producing firms in India are Ambuja Cement Limited, Birla Corporation, ACC Limited. The cement sector is characterized by high degree of market concentration and some interdependence. Market concentration means market power and interdependence. Identify the market form. जैसे interdependence keyword देगा कौन सा market form है? This is बस बढ़िया. Thank you so much for asking. Oligopoly. ठीक है, this is oligopoly. Explain one feature of the market form other than the number of sellers. Interdependence or intense competition. ठीक है, interdependence, intense. How come people are saying monopolistic? Interdependence is oligopolistic. Sir, in the chain effect, if we only explain the graph, will it be okay? But alongside giving the graph, you have to explain. ठीक है? Yeah, selling cost is also acceptable. Interdependence is acceptable. Intense competition is acceptable. इसके अलावा आपका और क्या हो सकता है? Indeterminate demand curve is acceptable. Anyone would be acceptable. ठीक है? Question 3 part 2 we already discussed. A perfectly competitive firm may or may not continue production at the shutdown point. Explain. May or may not at the shutdown. Where is shutdown? Shutdown is AR is equal to AVC. Now they have asked you a very specific reason why may or may not, because losses under production and shutdown, losses under production and shutdown are equal to fixed cost, right? जितना नुकसान प्रोडक्शन में होगा उतना ही नुकसान शटडाउन में होगा, which is बराबर to fixed cost.
इफ AR इज इक्वल टू AVC प्रोडक्शन करते तो भी AVC जितना ही नुकसान हो रहा है, एंड नहीं भी करते तो भी AFC जितना ही नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन करने पर भी AFC का ही नुकसान हो रहा है, नहीं करने पर भी AFC का ही नुकसान हो रहा है। सो फर्म मे और मे नॉट प्रोड्यूस, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्म। इज दैट क्लियर? Yeah, so it's totally upon the discretion of the firm whether they want to produce. If they make a permutation combination where they feel that they will be able to cover up some part of fixed cost after producing, after beginning to produce, they might start producing. But if they feel that no, they still have to sit, reflect back and think whether they will be able to cover up their fixed cost or not, in that case they will not produce. So it is totally at the discretion, it is at the wish, will of the producers themselves. Is that clear? चलिए, in 1986, 3D System Corporation, an American company, received first patent for SLA 3D printer. They enjoyed this patent right for several years. Which market form did the above product belong to at that time? Patent के वजह से और कोई आ नहीं सकता है. Patent barrier किस में देखा जाता है? They enjoyed the power and that is monopoly. ठीक है? They enjoyed the exclusive ownership, that is monopoly. Did this market form require to adopt sales promotion measure? Give a reason. The answer is no. They do not require to adopt because apart from them, there is nobody else in the market. There is just one seller. So people will have to come and purchase from them irrespective of the price. Be the prices be high or low, everything will be purchased from them itself. Not required. A perfectly competitive firm is a price taker while industry is a price maker. Justify. Why perfectly competitive firm is a price taker? Because prices are given to them by the industry. Prices are given to them by the industry whose prices are determined by the market forces of demand and supply. I hope you all remember in chapter 11 we have done this, that the entire industry determines the price by the collaborative intersection of demand and supply, and each individual firm has to accept that price, and that is why P equal AR equal MR under perfect competition. And firm is a price taker while industry is a price maker. Is that clear? Diagrams are to be given whether asked for or not asked for. If you feel that diagram can be justified along with the elaboration, please do give it in your answers. Okay? Nowadays, people are withdrawing their deposit from the commercial bank and investing in pension fund and mutual fund for higher return. What is the impact of the above on M3? Give the reason to support your answer. What is the formula of M3 first of all? M3 is equal to M1 plus time deposit, right? What is M1? M1 is currency in the circulation, demand deposit with the commercial bank and other deposit with the RBI. So if people are withdrawing their money from the bank and investing into the pension fund and mutual fund for higher return, what is going to happen? M3 is going to fall. M3 is going to fall and subsequently M1 is also going to come down, because the demand deposits with the commercial bank is going to reduce, as a result of which other deposits with RBI will also reduce. So M3 overall will fall and so your M1 as well. Is that clear? Decrease in M3 and subsequently M1 may be reduction देखने मिलेगा. Is that clear? State any two factors that limit the process of credit creation by the commercial bank. Wow, limitation of credit creation aa gaya hai. It is not going to be tested upon. Sir, this pension fund is not included in any type of money supply. No. No, it is included. It is included in M4 ना. NSCs नहीं, उसमें भी तो नहीं है, excluding है. Even M4 has
excluding of NSC, and NSC overall represents your government bonds. So नहीं, कोई भी pension fund वगैरह में जो भी पैसा लग रहा है, it is not to be counted separately, otherwise it leads to double counting error. So we do not take the bonds and securities issued by the government while calculating the money supply. उसका value is to be ignored. ठीक है? State two factors that limits the process of credit creation. What happens? What are the two factors? One could be your habit. Now, if people are not habituated in saving their money in bank, how will commercial bank extend credit to somebody else? Loan कैसे देगा? Habit is the reason. Or if the government bank rate is increased, bank rate or CRR बोल लो और आपका SLR बोलो, if these are increased, that restricts the credit creation capacity of the commercial bank. Is that clear? Chaliye, next one. Fiscal liabilities of union government arises due to borrowings from the internal or external sources. Internal debt accounts for nearly 65% of total liability of the union government. Explain two ways by which government can redeem the liability referred above. Debt redemption method बताना है आपको. The liabilities यानी fiscal deficit. I hope you all know that fiscal deficit itself is equal to borrowings. हमने discuss किया था when I was teaching government budget. Whatever is the amount of fiscal deficit, that itself is equal to borrowing. So high amount of fiscal deficit leads to higher borrowing and liability. So how can government redeem? Redeem का मतलब क्या होता है? Debt redemption. That is repayment कैसे कर सकता है government? How can government repay the debt? Repudiation, refunding, debt conversion, terminal annuities, capital levy, surplus budget, surplus and balance of payment. These are some of the points. Any two is to be featured. Sinking fund. Okay, all these are your answers. Is that clear, everybody? Let's proceed. The government incurs expenditure to ensure social justice. Explain. Yes, government does incur expenditure to promote social justice, because to the low income group, government has to provide subsidized food, electricity, and basic essential, so that the gap between rich and poor could be bridged. Is that clear? Important question देगा बेटा. रुक जाओ. Hang on, I'll give you important question. Stop spamming. The revenue expenditure of the government is 12 lakh, while its revenue receipts amount to 7 lakh. What kind of deficit arises here? Explain one implication of the deficit. Zahir sa baat hai, it is understandable, it is revenue deficit. What is revenue deficit ka implication? It accounts for dis-savings on the part of government. Secondly, it leads to burden on the future generation. Thirdly, it leads to debt trap. And fourthly, it can lead to inflation in the economy. Is that clear? Yeah. Inflation as well. Yeah, perfect. Let's proceed. The new income tax regime in the budget of 2024-25 exempts income up to 3 lakhs. Income from 3 lakh 1 to 6 lakh is taxed at 5% rate, and 5%. 10% tax rate is imposed on the income from 6 lakh 1 to 9 lakh, etc. Identify and explain the type of tax on the basis of relationship between the rate structure and the tax base. Draw the diagram of this kind of tax. Up to 3 lakh is 5%. Oh, okay. Up to 3 lakh it is 0%. Exemption hai. Up to 3 lakh it is 0%. 3 lakh 1 to 6 lakh tak 5% and then 10%. What kind of tax is this? This is progressive upward sloping. Shash Shriya Kalji आपको भी. It is progressive. ठीक है? Progressive tax. यहाँ आ जाएगा आपका tax rate on the y-axis, and x-axis will have your tax base. Please do not forget to label your diagram, otherwise your marks is gone. The export of a software business and travel services has grown by 5.2% recently, which has helped to bridge the gap caused by the trade deficit. Which account of balance of payment is affected by the fact mentioned above? How?
The export software business and travel services has grown by 5.2% recently. सॉफ्टवेयर हो, बिजनेस हो या ट्रैवल हो, क्या बोल रहा है? Services is your keyword. Service, which has helped to bridge the gap caused by the trade deficit. Which account of balance of payment is affected? Which account? Current. Which account? Current account. Service is a part of current account. Differentiate between how because it leads to current account surplus. Okay, it can lead to current account surplus because if there is an export of software, business and travel service, so exports is gonna boom. Import, if it remains constant, export become greater than export, and that leads to a surplus current account. Surplus in the current account. Is that clear? No, dear, I don't want to take class tomorrow. I want you all to sit and study on your own. लास्ट मोमेंट तक भी आप टीचर्स को देखते रहोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? आप बताओ, पूरा साल था आपके पास पढ़ने के लिए. नाउ इट्स योर डे, यू शुड बी रिवाइजिंग ऑन योर ओन. No one should be coming and unnecessarily creating burden on your head. No. Next one, differentiate between autonomous and accommodating transactions in the balance of payment. Autonomous are generated. No. For progressive tax, the tax will not start from origin. It has to be above origin. Above origin. Above origin. Above origin. ठीक है. हाँ चलिए. Autonomous is basically generated out of normal economic consideration for profit motive वगैरह for economic returns, while accommodating capital flows are deliberately done to adjust the disequilibrium in the balance of payment, to bring the disequilibrium back to equilibrium. That is why we make the accommodating adjustments in the capital account. Is that clear? Tax base and income is the same thing. Next one. Read the following. Briefly explain two reasons for adverse balance of payment situation. Direct question हो जाएगा. Fall in foreign demand हो गया. आपका inflationary pressure हो गया. इसके अलावा आपका appreciation of the currency हो गया. इसके अलावा आपका और क्या जा सकता है? Fall in foreign demand, appreciation, inflation. What else could be the reason? दो ही बताना है, तीन बोल दिया मैंने, बाकी तो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी. इट्स नॉट स्ट्राइकिंग. चलो. Read the following situation that are interrelated. State if each one of these would be a part of national income accounting or not. Give a reason for each of the situation. Sukhjit won 6,40,000 in a game show. Will you take this into the consideration of national income? 6 लाख का लॉटरी या जो भी है, 6,40,000 का गेम शो में जीता. इट्स विंडफॉल. Do we take windfall games into national income? No. It is not to be taken into consideration. He bought second-hand car through a broker for 5 lakh from the amount won. He bought a second-hand car. Pure exchange transactions. Do we take pure exchange transaction? कोई भी second-hand purchase and sales को हम लोग लेते हैं? The answer is no. Lovely, no. Brokerage commission. Brokerage commission. Brokerage commission लिया जाएगा. Yes. It is rendered for the current service. Perfect. Yes. He invested a certain sum of money in the government bonds. Any kind of government bond, financial assets. Do we take that? No. Any kind of financial title. No, government bonds are not to be taken into consideration. No. Any kind of financial titles and securities? No. It is not to be taken into account. Why it is not to be taken into account? Because it is already paid out of your own income. So नहीं लिया जाएगा. ठीक है.
Section C. During the festival of Dashera, the prices of banana increased by 15%, but the total expenditure on bananas for a household remained the same. If price increases and your expenditure does not change, क्या सीखा है आप इसके बारे में? What can we conclude about the elasticity? Elasticity of demand is, what is the elasticity of demand? Elasticity of demand is perfect, lovely. It is unitary. If there is an inverse relationship between price and expenditure, inverse होगा तो it is greater than 1. And अगर direct हुआ, if there is a direct relation between price and expenditure, in that case your elasticity is less than 1. Please remember that. Is that clear? Is that clear? Let's proceed now. Next, to attain maximum satisfaction, a consumer uses the following schedule. Unit and total utility are given. Determine the equilibrium of consumption when the price of a commodity is 11. So TU से पहले MU निकाल लेते हैं. MU कैसे आएगा? How will you derive MU? MU is the change in total utility, TUN minus 1. What will be the first MU? 15 पे 15 ही रहेगा. Why? क्योंकि अगर 0 होता तो total utility क्या होता? 0. MU will be 15 for the first one. ठीक है, do not make it nil. Do not make it nil. चलो 15 minus 0 will be 15. 27 minus 15 कितना हो जाएगा? 27 minus 15 will be 12. 38 minus 27. Again, trust issues with mathematics, so that is why 48 minus सी अगेन देखा, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज है. 38 को 48 पढ़ रहा हूं. 38 minus 27 is 11. ठीक लिखा है. 45 minus 38 is 7. 45 minus 45 is 0. 43 minus 45 is minus 2 and then minus 5. बोलिए कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? Which level of output? Which level of output? मैं क्वांटिटी लिख लूं एक बार फटाफट से ताकि इजी हो जाए लिखने का. Let me write units. Units will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. बोलो कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? थर्ड यूनिट पे. ठीक है, थर्ड यूनिट पे आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम. व्हाई? बिकॉज mu x इज इक्वल टू प्राइस x. इज दैट क्लियर? एंड अगर आपसे कंज्यूमर सरप्लस पूछ लेता, अगर आपसे कंज्यूमर सरप्लस पूछ लेता तो ये वाला हिस्सा होता. ठीक है, दिस वन वुड हैव बीन योर सरप्लस. And there is nothing regarded as deficit. There is no consumer deficit in economics. Is that clear? मेरे नोट्स में जितना लिखा है उससे ज्यादा आपको एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. ठीक है, चलिए. A linear consumption function is given as C is equal to 500 plus 0.7y. Identify the autonomous consumption. मैंने आपको क्या सिखाया था? C is equal to A plus MPC into Y. राइट, ये जो A है यानी ये हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन. 500 इज योर A. याद आ गया सबको? ऑटोनॉमस. एंड MPC क्या होता है? MPC जो आपका डेसिमल वाला रहेगा वो हो जाएगा MPC. सो दिस इज MPC. MPC is 0.7. State the relation between MPC and MPS and hence calculate MPS. Relationship is Siamese twin. That is, if we add MPC plus MPS, we should get 1. Since यहाँ पे MPC is 0.7, so MPS would become 0.3. Is that clear? Since MPC is 0.7, so MPS will become 0.3. Perfect. Let's go ahead. Refer to the diagram given below and answer the questions that follow. Find the investment multiplier in the diagram. How is it related to MPS? Which one is your investment multiplier? How much is your investment multiplier? कैसे represent करेगा आप investment multiplier को? कितना से? आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको सिखाया है
दैट ये जो डेल्टा आई आप देख रहे हो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, मतलब ये जो चेंज है इन दोनों के बीच का, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आई. So if they ask you to derive investment multiplier, it is basically from A to E1 is your delta I. ठीक है, A to E1 is your delta I, the gap. A to E1 is your delta I. How is it related to MPS? रिलेशन कैसा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? मैंने उस दिन बताया था, आपको लिखवाया भी था. देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन K and MPS. ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS. हायर इज द सेविंग इन द इकोनॉमी, lesser is the amount of money multiplied. So there is an inverse. Explain the multiplier mechanism referring to the diagram given above. Explain तो आप कर देगा ना क्या होता है. ठीक है, explanation में क्या जाएगा? Whenever there is a rise in the autonomous investment in the economy, it will shift the aggregate demand upwards, leading to a new aggregate demand represented by A1, AD1 या AD1 भी होना चाहिए, represented by C plus I plus change in I, resulting in rise in income by multiple times due to change in investment. So multiplier is to express that there will be a change in income कई गुना ज्यादा multiple times due to change in investment. Is that clear? No, I'm not conducting any one-shot marathon tomorrow. I'm done. I'm exhausted. Next, briefly explain the following: involuntary unemployment and induced investment हो जाएगा. What is involuntary unemployment? When people are unemployed against their wish. सर इसमें इन्वेस्टमेंट का तो ग्राफ नहीं है. नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट का ग्राफ नहीं, ये जो चेंज है यही इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. Involuntary unemployment is basically when people are unemployed against their wish. Although they are willing to work at the prevailing wage rate, but they are not finding any productive work and therefore they are unemployed. On the other hand, what is induced investment? Induced investment is that investment which does not change with the change. Induced investment is the one which changes with the change in level of income. Higher income leads to higher investment. It is income elastic. ठीक है? It is income elastic. Yeah. Chale, let's proceed. Discuss the components of gross domestic capital formation. How can it be converted into net domestic capital formation? Gross domestic capital formation is investment. And investment का कितना प्रकार होता है? तीन. Gross fixed investment, inventory investment, and third is residential investment. Fixed investment is basically investment in the fixed assets. Inventory investment is the investment in the current assets, and residential is housing का investment. ठीक है? And if you want to convert the gross domestic capital formation into net, what will be net domestic capital formation? Net domestic capital formation will be gross minus depreciation. It will be gross minus depreciation. Oh, thank you so much, Rajat Mittal. This means a lot. I watched all your micro and macro videos. Thank you for providing quality education. Means a lot there. Thank you so much. चलिए, calculate national income using the following information. निकाले. Let's estimate the national income. कितना आएगा? NNP, MP expenditure method से निकालना है. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस नाम से दिया है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसको क्या करना है? इसको ग्रॉस बना लेना है. ग्रॉस कैसे बनाएंगे हम लोग? इसमें क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस आ रहे हैं, सो प्लस डेप्रीसिएशन. कितना है अपना डेप्रीसिएशन? व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल? 60. तो क्या करेंगे? 225 प्लस 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 285. दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट आई. This is our C, this is our G,
एंड वेयर इज नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, सो NX कितना आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट विल बी, एक्सपोर्ट इज 50, इंपोर्ट इज 80, सो नेट एक्सपोर्ट इज -30. चले अब निकाले, सो GDPMP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, कितना आ जाएगा आपका 1500 प्लस 285 प्लस 750 प्लस ब्रैकेट में -30, कितना आ रहा है बताइए GDPMP, हाउ मच इज GDPMP? Numerical will come for a 4-mark question. It used to come for 6 mark, but now they have changed the pattern there. 285 plus 750 minus 30 is 2505. क्या इतना ही आ रहा है बताइए GDPMP? यस, चलो ठीक है, सही जा रहा है मेरा. हमें निकालना है NNPFC किसमें से, GDPMP से. सो ग्रॉस से नेट विल बी माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल विल बी प्लस NF/A, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट विल बी माइनस NIT. सो 2505 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 60 प्लस NFI कितना हो जाएगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड इज 15 एंड पेड इज 8, तो कितना हो गया आपका 15 माइनस 8 इज 7, सो 7 हो जाएगा NFIA, एंड क्या करना है माइनस NIT, इनडायरेक्ट टैक्स इज 100, सब्सिडी इज 25, सो NIT इज 75. 2505 minus 60 plus 7 minus 75. 2377. Perfect. Perfect. 2377 crore is your answer. That is your answer. ठीक है? Lovely. 2377 is your answer. Is that clear? Shall we proceed now? Please explain the components of gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation, beta, is basically investment expenditure, and we invest in 3 kinds in the fixed assets. That is why it is gross fixed capital formation. Inventories में asset मतलब inventory में invest करते हैं, that is आपका current assets में, so inventory investment, and घर पे invest करते हैं, so residential. These are the 3 components. No, I very much am happy with my ISC ka English. I'm not willing to start off with CBSE as of now. There is too much of content for CBSE. I am not required over there. I think there are substandard quality content in ICSE and ISC which needs to be catered first. So my heart and soul is with ICSE and ISC. I'm not going to switch that. I have myself been an ICSE and ISC student. I don't want to teach CBSE. ठीक है? चलिए, डिस्कस एनी 4 प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्शन मेथड. क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा आपका, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट आर टू बी टेकन. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Goods for self-consumption is to be taken into consideration while estimating national income. Any kind of second-hand purchase and sales not to be taken into account. Brokerage commission to be taken into account. Financial assets not to be taken into account. But brokerage on the financial assets, brokerage commission on such sale and purchase of shares and debentures are to be taken into account. Is that clear? Income in kind is income method का बेटा. Yeah, I'm not switching. मैं ISC छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ. Don't worry, I'm here in ISC. CBSE मेरे को नहीं पढ़ाना है. Calculate NDPFC and GDPFC using the following information. चलो फटाफट से जल्दी से बनाओ. क्या आएगा? NDPFC मतलब domestic income हो गया. We know that NDPFC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. क्या क्या आएगा COE में? Compensation of employee में wages and salaries आ जाएगा. और क्या आएगा? और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा? सीओई में यही आएगा. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा? रेंट, इंटरेस्ट पेड बाय प्राइवेट फर्म भी आ जाएगा. नेशनल डेट नहीं आएगा, अनप्रोडक्टिव होता है. कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाएगा. डिविडेंड आ जाएगा.
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और कुछ आएगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर्स आ जाएगा। अच्छा ये भी तो आएगा, ये सीओई का पार्ट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी भी आएगा। एंड मिक्स्ड इनकम का है, देयर इज नो मिक्स्ड इनकम, परफेक्ट। चलो ऐड करो क्या क्या आ रहा है आपका, 1200 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 220 प्लस 150 प्लस 30, कितना आ रहा है, 1200 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 220 प्लस 150 प्लस 30, 1950. Is that what you are getting? Yes, perfect. 1950 crore is your NDPFC. First answer we got. And हमें निकालना है GDPFC. Convert कर सकता है ना? GDPFC is equal to NDPFC. DPFC कट, नेट से ग्रॉस पे आ रहा है, सो क्या करेगा, प्लस डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रॉस पे आ रहा है, सो प्लस डेप्रीसिएशन। सो 1950 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 20, so it is 1970 crore. Is that clear? 1970 crore, perfect, lovely. Sir, only profit is given, then we will not take dividend. Yes, Yana Sharma. When the keyword profit is given, then we will not take the three things: dividend, undistributed profit, and corporation tax. When the keyword profit is given, do not include corporation tax, dividend, or undistributed profit. Only when you find that profit is absent, missing from the question, then you look out for the three components which I just mentioned. Is that clear? हाँ भाई दे रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाप रे बाप, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं अगले साल से यही करूंगा। इवन आई विल स्टार्ट मेकिंग क्लिक बेट्स। डू दिस 5 क्वेश्चन एंड गेट 100 in eco. चलो, the hotel industry in India is a diverse mix of domestic and international establishment. Major market establishment in the Indian hotel industry can be categorized into two main sectors: organized and unorganized. Organized establishment in the Indian hotel industry refer to those businesses that operate under reputed brand chain group with standardized services and facility. They adhere to regulatory standards and guidelines. Some of the key groups in the segment are ITC, Marriott, Indian Company Limited, Hyatt, Radisson, etc. Unorganized sector, smaller independent, blah blah blah. Which form of market is being referred to in the above passage? Provide a reason to support your answers. बताइए, होटल इंडस्ट्री मतलब क्या हो जाएगा? Diverse mix of domestic and international establishment. Indian hotel industry is into two sector, organized and unorganized. जहां पे हमारे पास ITC, Marriott, Indian, बेसिकली ये क्या है? Close but not perfect substitutes. अब चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर का होटल लो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होटल लो, accommodation is accommodation. Accommodation is accommodation. So you have variety of option. Do not make the mistake of choosing oligopoly over here. It is not oligopoly. Hotel industry is monopolistic. Every company tries to outperform the other by the sales promotion. ठीक है, advertisement के through. No, it is not oligopolistic. It is monopolistic. Hotel industry is monopolistic. There are multiple options, so we have close but not perfect substitutes. ठीक है? It is not oligopolistic. Explain two features of this market referred in the subpart. What could be the two features of the market? Differentiated product, selling cost, price maker. Thank you so much, Mansi Jain. This means a lot. Thank you so much, Yashvi, Akshat. Akshat ने आंसर दिया था. Large number of buyer sellers, daily dose. Thank you all. This means a lot कि अगर आपको ऐसा लगता है. I don't consider myself of that superior. मेरे से भी अच्छा पढ़ाने वाले होंगे. It's just I'm doing my duty. I'm trying to provide the best which every child
deserves. At least in school education they do deserve. कॉलेज में कोई देखने नहीं आता कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है. एटलीस्ट स्कूल में आप पे कर रहे हो, यू डिजर्व क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, चलो हो गया. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन हो गया ना? नहीं, दो और बाकी है. कंपेयर द नेचर ऑफ द डिमांड कर्व विद एनी अदर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट. What is the nature of the demand curve under monopolistic? Under monopolistic, demand curve is flatter, relatively elastic. Monopoly में demand curve is steeper, relatively inelastic. This is for monopoly. And perfect competition में demand curve is horizontal, straight line, parallel to horizontal axis. Is that clear? Comparison हो जाएगा तीनों का. सर पेपर देने चलोगे साथ में? चलो. What is price discrimination? In which market form is it observed? Practice. Price discrimination is the act of charging different prices for the same product from the different set of consumers. Different prices, same product, different set of consumers. So in which market is it observed? It is observed in monopoly. It is observed in the monopoly market. And this brings us to the end of this paper. Now, in my opinion, this compartment paper was very easy. इतना आसान पेपर आपका बोर्ड्स में नहीं आएगा, गारंटीड नहीं आएगा. हो सकता है कि बोर्ड्स का पेपर टफ आएगा. कंपार्टमेंट क्योंकि कोई बच्चा सेकंड टाइम दे रहा होता है, मतलब कोई बच्चा अगर फेल हो गया हो उसके लिए उसकी कंपार्टमेंट आती है, या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहा हो, तो ऑब्वियसली अ चाइल्ड डज नॉट गेट मच टाइम टू प्रिपेयर. मे बी दैट इज व्हाई काउंसिल इज मेकिंग अ रिलेटिवली इजियर पेपर ऑफ कंपार्टमेंट. बट बोर्ड्स का इतना आसान नहीं आएगा, इस बात का आप गारंटी लगा लीजिए. ठीक है. नाउ द मोस्ट अवेटेड थिंग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट दे रहा हूं. इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर. इंपॉर्टेंट बोलिए ना सर. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है सर? आ जाओ. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, this important areas are to be stressed upon. You will not completely blindly rely upon these things. ठीक है, this is just coming out of experience. So इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. That's all we are saying. चलिए, स्टार्टिंग विथ आपका फर्स्ट चैप्टर डिमांड. ठीक है, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट चैप्टर डिमांड. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करेगा? Sir, your prediction in commerce helped really. Okay, if it did. Types of demand. And when I say types of demand, you will do all types of demand because यहाँ से क्या आएगा? Identification. हालांकि इस साल के लिए ex ante ex post is highly probable. Second is difference between given versus inferior good. Difference between them is very important. ठीक है. Difference between given versus inferior good is very important. All given goods are inferior, but all inferior goods are not given. That is a very important question. एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया जितना करना था. मैंने इतना एक्सप्लेन किया कि जितना बाकी किसी और ने किया भी नहीं होगा. अब जाके उसको आराम से चेकआउट करो. ठीक है. इन माय ओपिनियन जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट है ना डिटर्मिनेंट में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में आए, दैट इज नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और इनएक्सपेंसिव गुड, का चाहे आइडेंटिफिकेशन आए या बनाने आ जाए, कुछ एक इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए. ठीक है. Thank you so much, Anu. I know my subscribers are less because I started very late. I started off last year. Maybe I will get my recognition which I deserve if I continue to put in the hard work. Is all that I know. Okay? Don't worry. I'm not in a hurry.
for success or something like that. If I deserve it, मेरे को मिल जाएगा, simple as that. चलो, now what are some, अच्छा एक और चीज, movement versus shift, यानी कि चाहे आपको expansion या increase in demand का वो लोग difference पूछ ले, या contraction या decrease in demand का पूछ ले, कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा. मतलब होना चाहिए, in my opinion 2 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन भी देखने मिलना चाहिए. ठीक है. And some of the important terms which are important for your 1 mark answer. ठीक है, कुछ terms जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिमांड में, जो 1 मार्क में टेस्ट अपॉन किया जा सकता है. दैट इज सबसे पहले तो इनकम इफेक्ट क्या होता है. A change in demand on the account of change in real income resulting from the change in price is income effect. उसके बाद प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए 1 मार्क में. प्राइस इफेक्ट इज अ समेशन ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. उसके बाद तीसरा टर्म जो आपको पता होना चाहिए, जितने भी इफेक्ट है सारे 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू इम्यूलेट एंड कॉपी द स्टाइल ऑफ अदर्स. ये आपको पता होना चाहिए. हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का पिक्चर आ जाए, पिक्टोरल बेस्ड आ जाए, पिक्टोरल बेस्ड आ जाए एंड कुछ पूछ ले. ठीक है. इसके बाद सेटेरिस पैरेबिस फंक्शन, सेटेरिस पैरेबिस फंक्शन आपको 1 मार्क में पता होना चाहिए. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. ठीक है, एंड प्राइस. देखिए इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है. These are some of the most important areas which you should give your utmost emphasis. ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा. इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, इको में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. एंड तीसरा इन माय ओपिनियन वेबलेन इफेक्ट आना चाहिए. वेबलेन गुड्स और वेबलेन इफेक्ट में भी अंतर है. वेबलेन इफेक्ट इज हायर इज द प्राइस, बेटर इज द क्वालिटी. दैट इज डिफरेंट. एंड वेबलेन गुड इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. स्नॉब गुड को वेबलेन गुड बोलते हैं. दोनों सेम चीज नहीं है. डोंट गेट देम कंफ्यूज्ड, दे आर डिफरेंट. इज दैट क्लियर? चले, ये हो गया आपका डिमांड. देख लो, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है ले लो. फिर जब पेपर देखोगे खुश होके मेरे को बताना कितना मार्क्स का टैली किया कितना नहीं किया. ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. ठीक है, खुशी खुशी बता देना कितना मार्क्स का आया टैली करके. नोटेड, डन. चले आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर. The most important 6 mark or a 4 mark question is indifference curve in budget line approach. That is आपका ordinal approach इस साल के लिए बहुत probable है. ठीक है, ordinal approach is very highly probable for 6 mark or a 4 mark question. इसके बाद अगर ये नहीं दिया, then in my opinion second best option should be relationship between total utility and marginal utility. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड इंपॉर्टेंट बन गया. अगर ये नहीं दिया देन लास्ट ऑप्शन जो कि इस साल होना नहीं चाहिए. सी काउंसिल ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल where 1 year it is cardinal and the other year it is ordinal. So since it was two commodity case last year, that makes indifference and budget line very probable for this year's board examination. वो नहीं दिया तो TUMU के ऊपर फोकस ज्यादा जाएगा. अगर वो नहीं हुआ तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन आता है 1 कमोडिटी केस, जो कि बहुत कम चांस है आने का. ठीक है, 1 कमोडिटी केस दैट इज कार्डिनल. हालांकि ऐसा करता नहीं काउंसिल. कार्डिनल दिया था तो ऑर्डिनल देगा, ऑर्डिनल देगा उसके बाद कार्डिनल देगा. दैट इज हाउ इट गोज. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट तो कर लीजिएगा.
कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल का डिफरेंस 3 से 4 पॉइंट कर लीजिएगा। फॉर शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन बी का पोर्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी becomes highly probable and that too कौन सा पता है, two IC can never intersect each other, that is very important. Two IC can never intersect each other, that is very important. और IC is convex to the origin is very important. These two properties are very 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 important. ठीक है, चलो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द टर्म्स जो आपको 1 मार्क के लिए पता होना चाहिए इस चैप्टर से, जो पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ इक्वी marginal utility, I'm not saying law of diminishing marginal utility, I'm saying law of equi marginal utility. कृष सिंह चलो कर तो सब लिया है, देखते हैं अब 70 आता है कि 7 आता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ सटाइटी इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। पॉइंट ऑफ सटाइटी इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। monotonic preference is important for 1 mark. Monotonic preference is important for 1 mark. Consumer surplus is important for 1 mark. Meaning of MRS is important for 1 mark. And scale of preference is important for 1 mark. ठीक है? Sir, I always face a problem with theory of the life of me. Theory for the life of me. Sometimes I seriously cannot recall the exact keywords. Well, you just had to do multiple revision, beta. And I think it's too late now. Recall power enhances with multiple revision. That is the only strategy which a topper has. Done. If you want a screenshot, please take a screenshot of this. Take a screenshot of this. Noted. Done. आगे बढ़े. चलो थर्ड चैप्टर की तरफ चले. Next is elasticity of demand, EOD. न्यूमेरिकल तो 100% आ ही रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 या 2 में आपको न्यूमेरिकल तो देखने मिलेगा ही मिलेगा इस साल. Sir, case studies confuse me a lot. How to exactly decode every part and point to be done? You had to practice multiple questions, beta. Numerical is very important. Total expenditure method is very important for this year. आप देखेंगे अगर आपने मेरा सैंपल पेपर लिया तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से. वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. ज्योमेट्रिक मेथड मेरा थर्ड बेस मतलब थर्ड प्रेफरेंस है चूज करने का. लाइक प्राइमरी ये आना चाहिए. ये नहीं दिया तो फिर ये दे देगा. उल्टा पता है ज्योमेट्रिक मेथड किसका देगा? सप्लाई का देगा अगर देना होगा. सप्लाई इज मोर कंफ्यूजिंग दैन डिमांड. डिमांड से ज्यादा कंफ्यूजिंग सप्लाई का है, तो सप्लाई देके फंसाएगा अगर फंसाना होगा तो. ठीक है. डिग्रीज तो भैया जी ऑल, अब चाहे वो आइडेंटिफिकेशन में आए 2 मार्क में आए जैसा भी आए, बट डिग्रीज आपको सारा पता होना चाहिए. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. एंड उसका शेप्स भी आपको पता होना चाहिए. कहाँ फ्लैट है, कहाँ स्टीप है, कहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कहाँ हॉरिजॉन्टल है, कहाँ वर्टिकल है. वो कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा वो हमें नहीं पता. हो सकता है इलास्टिसिटी को मर्ज कर दे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के साथ. मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मोनोपोली में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में परफेक्टली इलास्टिक है. सो इट कुड ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड. हो सकता है टोटल रेवेन्यू को इंटीग्रेट कर दे आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के साथ. रेवेन्यू चैप्टर जोड़ दे टोटल एक्सपेंडिचर के साथ. सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इज सच व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड ऑल टुगेदर. सो यू कैन नेवर से कि ये ऐसे सीधा सीधी आएगा कोई गारंटी नहीं, घूम के आएगा. इतना आप जान के चलिए. ठीक है. मेरे को जो पढ़ाना था मैंने सब पढ़ा दिया बेटा. मिस्टर जैन सर आंसर राइटिंग पे एक वीडियो मैं कल आ रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है. हाउ योर पेपर इज टू लुक लाइक टुमारो, नॉट टुडे. पहले आप पढ़ लीजिए आज भर.
ठीक है, उसके बाद आपका बचता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कैसे आएगा पता है? इससे दे देगा केस स्टडी। अब जिन्होंने मेरा सैंपल पेपर लिया है उनको यहाँ पे टाइम पीरियड वाला पार्ट से और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट से केस स्टडी देखने मिला था। सो आपको केस स्टडी देके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी को और बताना पड़ेगा कि आपका इलास्टिक डिमांड है या इनइलास्टिक डिमांड है। इज दैट क्लियर? वी आर ऑल कुक्ड। साल भर नहीं पढ़ाई किया तो यू इंडीड आर कुक्ड माय डियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देख लो जो देखना है, देन कमिंग टू सप्लाई। अब बस डिमांड से इतना ही है, ठीक है। कमिंग टू सप्लाई नाउ। लोगों को आदत हो गया इधर उधर जाने का, सब स्टैंडर्ड देखने का, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो सप्लाई से व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व मेहनत किसी को करना नहीं है, सबको इजी पीजी में सब कुछ चाहिए। वर्टिकल सप्लाई कर्व इज इंपॉर्टेंट। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का जो डायग्राम है, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का जो डायग्राम है, दैट ऑल्सो अलाइंस विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय द वे। हाँ, शॉर्ट रन में इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में इट इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। दैट इज इंपॉर्टेंट। As I said, geometric method of supply is extremely important in my opinion. ठीक है, geometric method of supply is extremely important in my opinion. Very high chance of being asked. Very high chance of being asked. ठीक है, नहीं समझ आ रहा, मैंने पढ़ा दिया बेटा लक्ष्य। एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी वाला जो पॉइंट है ऑन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, टैक्सेशन बढ़ने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सब्सिडी देने से राइटवर्ड शिफ्ट। इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी ऑन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट आए कि आपका केस फॉर्मेट में आए, कैसे भी आए, बट आना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह इतना कुछ हुआ है हमारा, उससे रिलेटेड कहीं से आपका इकोनॉमिक टाइम्स का एक कटआउट उठा के या मनी कंट्रोल से कहीं से कोई एक लाइन उठा के आपको कुछ भी दे देगा वो लोग, ठीक है। चले आगे बढ़े। सप्लाई इज डन। नेक्स्ट इज मार्केट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज मार्केट मैकेनिज्म। प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस सीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन चेन इफेक्ट, ये तो भैया जी आएगा आपका केस के फॉर्मेट में। डिमांड बढ़े सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड घटे सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई बढ़े डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई घटे डिमांड कांस्टेंट। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट। I am on the verge of collapsing with all the syllabus I have to cover. God bless your soul, dear. You have a lot to cover if you haven't started. I agree with you. You are late, and this time you won't be great if you are so late to cover. चलिए third one. Special cases भी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है ना, इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाता है। इको में ऐसा है ना कि एवरीथिंग गेट्स मर्ज, नो, सो कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई से क्वेश्चन ना देना हो
तो यहां से घुमा के दे देगा, मार्केट मैकेनिज्म के साथ मर्ज कर देगा। चले आगे बढ़े। नाउ टर्म्स का कुछ बात करूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से बता दे रहा हूं मैं 1 मार्क के लिए। आपको पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। You all should be knowing stable equilibrium. You all should be knowing what is excess demand and excess supply for 1 mark. Besides, you all should be knowing what is a buffer stock for 1 mark. Besides, you all should be knowing what is rationing for 1 mark. And besides, you all should be knowing what is black marketing for 1 mark. These are some of the important terms which you all should be knowing. Sir, আপনার মতো deep dive economics এ এত ভালো পড়ানো মানে thank you so much sir for the efforts. You're most welcome Tamal Das. You're most welcome. It means a lot dear beta. Your support means a lot to me. Just अगर आपको मेरे को honestly support करना है, see मैं marketing PR मैं भी करूंगा, ठीक है, मेरे को थोड़ा time लगेगा समझने में, but what I have loved about myself is word of mouth. वर्ड ऑफ माउथ का जो इम्पैक्ट होता है, जो पड़ता है, वो कोई मार्केटिंग पीआर कुछ नहीं कर सकता है, मार्केटिंग गिमिक से भी नहीं हो सकता है। आप अपने जूनियर्स को मेरे बारे में बोल के जाएंगे एंड उनको सिर्फ इतना बोलिएगा, जाके वीडियो को एक बार चेकआउट कर, पेशेंटली बैठ के सर का वीडियो देखना। सर 10 मिनट में पढ़ाने वाला आदमी नहीं है, हम 10 मिनट्स में नहीं पढ़ा सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट को, मेरे को पढ़ाने में टाइम लगेगा, बट आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा कि उसके बाद आपको सेकेंड टाइम मेरा भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। दैट्स माई अश्योरेंस, ठीक है। नहीं, एक्सेस डिमांड फॉर मार्केट जान लो, वो वाला जो एक्सेस डिमांड है दैट इज डिफरेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप वाला, दैट इज डिफरेंट। चलो आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू लॉज ऑफ रिटर्न, चैप्टर 7, लॉज ऑफ रिटर्न। नाउ टॉकिंग अबाउट, इसमें सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बात करूं, इस साल का लॉन्ग क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग मतलब क्या, 4 मार्क इज द मैक्सिमम मार्क्स जो दे सकता है। फॉर दिस ईयर आई फील दैट रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स में भी पार्ट पार्ट करके भी वो लोग सेक्शन बी में तोड़ के दे सकता है। सो 2 मार्क्स में अगर देना हो तो वो लोग देगा डिफरेंस बिटवीन return to a factor, RTF is return to a factor and RTS is return to a scale। ये 2 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं दिया ना तो फिर इसको क्या करेगा पता है, इसको दे देगा स्केड्यूल के फॉर्मेट में, स्केड्यूल दे देगा एंड बोलेगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा इसका। मतलब समझा हम क्या बोल रहा है, स्केड्यूल आपको दे देगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है। स्केड्यूल दे देगा एंड उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने बोल देगा। दैट इज हाउ दे आस्क यू अ क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़े। नहीं तो फिर सेकंड इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर दिस ईयर रैशनल प्रोड्यूसर decision becomes very important again. So my instinct goes towards relation between APMP first, my first priority, then my second priority goes towards rational producer decision making, and then ये सब चुन्नू मुन्नू टॉपिक है जो वो लोग वहां से दे सकता है, ठीक है। And of course my third priority goes towards causes of 3 stages, less important but
इंपॉर्टेंट, ठीक है, these two are very important and this is less important but important. Causes of 3 stages. नहीं, मेरे हिसाब से इस बार पूरा वो जो 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा. Like I don't know, you never know. जो 6 मार्क का होता है ना, explain the behavior of short run production function, they should not be testing upon. Rather उसको, since we are talking about HOTS ना, high order thinking skill, उसको तोड़ के देगा आपको, केस स्टडी के फॉर्मेट में देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा. इज दैट क्लियर? इतना काउंसिल भी बैठा के नंबर नहीं देगा आपको जितना आसान आप समझ रहे हो. इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट पीस ऑफ केक वॉक. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. Cost and revenue. Sir, where is rational producer decision making? In the book and in my notes as well. Cost and revenue. चले स्टार्ट करें. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कॉस्ट तो पता है हमको, इवन तो इंपॉर्टेंट देने का मन नहीं, फिर भी हम दे रहा है. बट आप कॉस्ट को just gobble it down and digest. You never know from which corner will the question be asked, क्योंकि इतना सारा justifications and reason है हर एक कॉस्ट के पीछे का कि कुछ भी आपसे पूछ सकता है. तो सबसे पहले तो हम लिखेगा reasons for the shape of all the cost curves. सारे, be it TFC, be it TVC, be it TC, be it AFC, be it AC, be it AVC, be it MC, सब के शेप का कारण क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. TVC and TC are inverted S-shaped, concave downward, concave upward. TFC is a horizontal straight line parallel to x-axis. AFC is rectangular hyperbola, that too asymptotically hyperbola. AVC, AC and MC, all three are U-shaped because of law of variable proportion. They fall due to increasing return, they rise due to decreasing return. Reasons for all the shapes are important. ठीक है? No, it is not the most boring chapter. It is the most interesting chapter. सबसे ज्यादा brainstorm यहीं पे ही होता है आके. Next one. Again, what is important is that from this chapter is relation between AC and MC. अब मेरा बात सुनो. अगर relationship between AP MP नहीं दिया, अगर relationship between AP MP law से नहीं दिया, तो cost से उठा के दे देगा. AC MC का लगभग सेम है. एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन इज यूनिवर्सल. इफ मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज, एवरेज इज टू राइज. इफ मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, एवरेज इज टू फॉल. एंड इफ मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इज टू रिमेन कांस्टेंट. अब वो चाहे पहले इंक्रीजिंग पे हो या डिक्रीजिंग पे हो, रिलेशन यूनिवर्सल है. इज दैट क्लियर? Sir, long run I have just read as you had said told earlier. Is it fine? Yeah, it is absolutely fine. Thank you so much, Indian. Thank you so much, Bird. चले आगे बढ़े. सो रिलेशन बिटवीन एसी एमसी हो गया. 2 साल से नहीं आ रहा है. अब इस साल भाई काउंसिल को हम भी हाथ जोड़ के बोलता है कि दे दो भैया, थोड़ा सा नंबर बांट दो. एंड दैट इज न्यूमेरिकल. बेचारा बच्चा लोग तरस रहा था कॉस्ट का न्यूमेरिकल देखने के लिए. अब इस साल तो तीसरा साल है, अब इस बार भी नहीं दिया तो भाई ये तो फिर धोखा हो जा रहा है बच्चों के साथ. कॉस्ट से न्यूमेरिकल 3 नंबर का आना ही चाहिए. ठीक है, अब दे देना चाहिए. एंड देन आपका आता है इंपॉर्टेंट, इन माय ओपिनियन, अगर स्पेसिफिकली मेरे को अगर टेस्ट अपॉन करना हो, इफ आई वर टू सेट योर पेपर, आई वुड डेफिनेटली गिव यू बिहेवियर ऑफ एएफसी एंड एवरेज कॉस्ट कर्व. ठीक है, एंड ऑल द रीजंस, ऑल द जस्टिफिकेशन, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, why TFC is positive for 0 level of output, why for 0 level of output TC is equal to TFC, why the distance between TC and TVC is parallel, why AFC is high for low level and low for high level, why difference between AVC and AC fall, why AVC can never be equal to AC. ये जितने भी आपके जस्टिफिकेशंस है ना, अलग अलग मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन, इसको अच्छे से करके जाइएगा. मेरे नोट्स में सब दिया हुआ है. अगर आपने लिया है, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू कम सो हैंडी. यू आर गोइंग टू कम एंड थैंक मी लेटर फॉर दैट.
कि आर्यन भैया अगले सेशन से सारे जूनियर्स को आप बोलेगा कि कोई फ्रैंक टेक्स्ट बुक नहीं लेगा, सब सिर्फ मेरा नोट्स लेगा। इस बात का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इट इज सो डिटेल्ड, ठीक है। डू ऑल द रीजनिंग क्वेश्चन प्रॉपरली फॉर 1 मार्क, फॉर 2 मार्क इट कैन बी टेस्टेड अपॉन। चलिए, कॉस्ट से ये 4 के अलावा मेरे को नहीं लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट बनना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज आपका रेवेन्यू मॉडल। नाउ रेवेन्यू से क्या इंपॉर्टेंट जाना चाहिए? रेवेन्यू से जाएगा ऑफ कोर्स वाई पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफिकेशन। P equal AR equal MR का justification. Is that clear? Next important question is revenue का। इस साल का TR, AR, MR under imperfect competition becomes very important. Imperfect, not perfect. Now direct नहीं आएगा. Don't expect a 4 mark or a 6 mark question from imperfect competition. कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके टेस्ट करेगा। अब चाहे वो आपका टीआर एमआर का रिलेशन हो, चाहे वो आपका एमआर एआर का रिलेशन हो, चाहे फिर वो आपका कॉन्सेप्ट हो कि वाई रेट ऑफ चेंज इन एमआर इज ट्वाइस ऑफ एआर वाला कॉन्सेप्ट हो, वाई एआर इज ग्रेटर देन एमआर अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला हो, चाहे फिर टोटल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के साथ जोड़ के इलास्टिसिटी के साथ कंबाइन कर दे, कुछ भी आ सकता है, बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से आना चाहिए। एनी कॉन्सेप्ट विल बी टेस्टेड अपॉन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? एंड another most important thing which I find very important is compare AR curve of monopoly versus monopolistic अगर रेवेन्यू के साथ जोड़ना हो। मोनोपोली का AR कर्व इज रिलेटिवली इनइलास्टिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोलिस्टिक का AR कर्व विल बी रिलेटिवली इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? एवरीबडी नोटेड? जो नोट करना था नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, ठीक है। सच्ची में कॉमर्स में जो जो दिया था आया था वो? मैंने चेक भी नहीं किया है ज्यादा, पता नहीं। लोग इतना ज्यादा हाइप कर रहा है, मांग रहा है इंपॉर्टेंट दे दो, इंपॉर्टेंट दे दो। Sir, where is AR curve of monopoly in the book? I don't know if there is AR curve of monopoly in the book or not. My notes में, मेरे notes में सब है। Everything is there in my notes. बुक से ज्यादा है। हाँ, yes sir, yes sir। चलो आगे बढ़े। Next chapter, forms of market। Forms of market। सर 90% आया है। हो सकता है यार, हम चेक भी नहीं किया, हमको टाइम ही नहीं मिला है कुछ चेक करने का। I've been very busy in life। चलिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, नाउ लास्ट ईयर फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाज द पेपर्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ऑलमोस्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट से सारा क्वेश्चन दे दिया था वो लोग मोनोपोली भी पूछ लिया, मोनोप्सोनी भी पूछ लिया, मोनोपोलिस्टिक भी पूछ लिया था, ओलिगोपोली भी पूछ लिया था, वो लोग कुछ नहीं बाकी रखा था। एवरीथिंग वाज आस्क्ड। एक चीज खाली बाकी रह गया था जो इस साल के लिए बच जाता है, वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, अब उसका फीचर्स बोलो, उसका इम्प्लीकेशन बोलो, उसका जो भी बोलो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट वाला जो पॉइंट है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। अच्छा, अब मेरे को अगर इंटीग्रेट करके देना हो, सपोजिटली हम आपको पूछता है एक्सप्लेन द काइंड ऑफ प्रॉफिट विच विल बी अर्न्ड अंडर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन, आप क्या बोलेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? What kind of profit will a firm under long run, a firm under perfect competition in the long run equilibrium attain? कैसा प्रॉफिट कमाएगा? हम लोग जानता है कि परफेक्ट कंपटीशन में there is a freedom of entry and exit, and due to freedom of entry and exit, as many sellers want they can enter, as a result of which जितना भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो वाइप आउट हो जाता है लॉन्ग रन में जाके।
सो लॉन्ग रन में ऑल द फर्म्स एंड अप अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा, ये हो गया प्राइस इक्वल AR इक्वल MR। आपको पता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा दिखता है, LAC भी यू शेप्ड है। ये हो गया आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये बन गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम। लो हो गया इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, बना दिया। आया समझ में कैसे आएगा? जोड़ जाड़ के आपसे कुछ भी पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला है मेरा नेक्स्ट ऑप्शन, फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, टीचर्स का भी फेवरेट, ओलिगोपॉली। क्योंकि बच्चा अक्सर ओलिगोपॉली और मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज रहता है जीवन भर। सो ओलिगोपॉली इंपॉर्टेंट है, दैट टू ओलिगोपॉली के साथ indeterminate demand curve, that is your kinked demand curve is very important। यानी कि कौन सा फीचर हो गया? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका, एज आई सेड, implication of freedom of entry and exit is very important। Implication of freedom of entry and exit is very important। इसके अलावा अगर HOTS में मेरे को कुछ पूछना हो तो हम ये जरूर पूछेगा, या कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स अंडर मोनोपोली और ओलिगोपोली? What are the type of barriers? Patent barriers, license barriers, barriers of economies of scale, investment barriers, cartel barriers। ठीक है, these are some of the type of barriers, oligopoly and monopolistic। अब इसको भी केस के हिसाब से पूछा जा सकता है, केस स्टडी बना के पूछ लिया जा सकता है। टू commodity case का diagram is not there for you all in the syllabus, so please chill, ignore and have a chill pill in life। Two commodity case diagram is not there for you all in the syllabus under cardinal approach। चलो आगे बढ़ते हैं, डन फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी हो। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज, प्लीज थोड़ा आंख का अंधा मत बनना, अच्छे से आइडेंटिफाई करना, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना वो यहीं से ही आएगा। पिक्चर को देख के आपको टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। टू कमोडिटी केस का डायग्राम आपके लिए नहीं है सिलेबस में, तो क्यों अभी लास्ट मिनट में अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहा है? मत करिए। चलिए नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मेरा टाइम खा गया तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने में। आई वाज सपोज्ड टू डू MCQs टुडे, फाइन। Producers equilibrium, TR and TC approach for this year's board examination is very, 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 very important. Like, I don't know how important it is. That doesn't mean this I'm talking about for 4-mark question, ठीक है? TRTC I'm talking about 4-mark question. That doesn't mean कि MRMC is less important। MRMC कुछ भी आपका 2-mark हो, 1 mark हो, MCQ हो, किसी में भी घुसा के इंटीग्रेट करके पूछ सकता है, या फिर डिटर्मिनेशन वाला हो, किसी में भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप MRMC छोड़ देगा, बट हाँ, फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन दिस ईयर TRTC अप्रोच इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट्स क्लियर। And of course, from this chapter, don't forget to do the difference between break even and shutdown point। ठीक है, don't forget to do break even and shutdown का difference along with your mathematical condition। Break even is where price equal AR is equal to AC
एंड शटडाउन इज प्राइस इक्वल AR इक्वल टू AVC। फैक्टराइज अगर करते AR और AVC को मल्टीप्लाई कर देते क्वांटिटी से, सो सेकंड कंडीशन इज where TR is equal to TC and where TR is equal to TVC. Is that clear? सर प्लीज जो MCQs टुडे। तो मैं सोऊंगा कब अगर MCQ कराऊंगा तो? आई एम स्टार्विंग, आई एम हंग्री, मेरे को भूख लगा है, कुछ खाने जाना है, अदरवाइज आई विल कोलैप्स। चलो मूविंग टू चैप्टर 11 डिटर्मिनेशन। देखता हूं कल ऐसा होगा तो कल सुबह जल्दी लाइव ले लेंगे, ठीक है? आई टेक अ लाइव टुमारो। मेरा सैंपल पेपर का डिस्कशन हो गया सातों का सातों। अब मेरे को 10-15 सैंपल पेपर देने का जरूरत नहीं, मेरे 7 सैंपल पेपर काफी अच्छे हैं। डिटर्मिनेशन, चलो डिटर्मिनेशन में व्हाट गोज इंपॉर्टेंट। पानी पी लो भैया, थक गए होंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके। डिटर्मिनेशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉसेस का डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। लॉसेस का ग्राफ को अच्छे से, इवन एग्जाम के दिन वाले भी सुबह के टाइम पे अच्छे से देख के जाना, लॉस को एकदम मत छोड़ के जाना, ठीक है? इसके अलावा सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज, इसके बाद अगर देना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट देगा अगर लॉस नहीं दिया। हालांकि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देगा, पता है नॉर्मल प्रॉफिट को अगर देना भी होगा तो अगेन दिस विल बी इंटीग्रेटेड विथ लॉन्ग रन। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा नॉर्मल प्रॉफिट का, लॉन्ग रन के साथ ही जोड़ के देगा अगर देना हुआ। एंड बहुत टाइम से नहीं देख रहे, नहीं आ रहा है, आना चाहिए भैया। डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व अंडर शॉर्ट रन देना चाहिए, बहुत समय हो गया है आए हुए इसको। अंडर शॉर्ट रन, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन, क्योंकि अगर ये दे दिया तो इसमें ब्रेक इवन, शट डाउन, क्लोज डाउन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सबका कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया ना सप्लाई कर्व में। एवरी कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड अपॉन, अगर ये वाला दे दिया तो आई थिंक ये देना चाहिए। सर ऑल नाइटर ना जी, आप ऑल नाइटर पढ़िए, हमसे तो ना हो पाएगा। हम लोग टाइम टू टाइम वाला आदमी है, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, टाइम से काम करो। We do not procrastinate like you guys. I wish you had stopped procrastinating at least 4 months before your board examination. Maybe you would have scored 100 on 100. Too late. चलिए, theory of income employment. Theory of income and employment. Theory of income and employment. एकदम इस साल के लिए तैयार हो जाइए SI अप्रोच देखने के लिए, ठीक है? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आना चाहिए, नहीं हुआ तो सेकंड प्रायोरिटी इज इन्फ्लेशनरी गैप का, हालांकि नहीं देना चाहिए। इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज माय सेकंड प्रायोरिटी। देन माय थर्ड प्रायोरिटी गोज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, फॉर 4 मार्क दैट विथ शेड्यूल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 मार्क विथ शेड्यूल। एंड यू नो कभी कभी काउंसिल इज लाइक सरप्राइज गाइस, सरप्राइज सरप्राइज, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं आगे। सरप्राइज बीप डैश। तो बहुत बार जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि बहुत टफ देगा, बहुत टफ देगा, देते देते पता चला कुछ ऐसा टॉपिक आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ना, आपको इजी टॉपिक आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब आप बोलोगे ये भगवान, ये तो याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा भी हो सकता है। सो प्रिपेयर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इसको भी आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, ठीक है? होप सो। चलो, एंड नहीं तो फिर अगर बोलते हैं ना एकदम ही सरप्राइज कर देना है तो फिर आपको 4 मार्क में कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दे देगा। इधर कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन घुसा देगा। लाइक
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जिसमें आपको सेविंग फंक्शन का मीनिंग, ग्राफ, प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब लिख के आने पड़ते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव बताना पड़ेगा, एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। एपीएस आपका इंक्रीज करता है विद इनकम, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1, ये सब लेके आपका 4 मार्क का आंसर बनेगा। ठीक है, no, in my opinion derivation of supply curve will be integrated, no it will not be integrated, it will be a direct question, उसको integrate कर दिया तो बच्चा रोने लग जाएगा फिर। ठीक है sir, to show saving diagram we have to show C and AS2. See, if you are aiming for 100 on 100, please show the derivative diagram for saving investment, ADAS बना के आना, फिर ऐसा ही बना के आना। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर बात किया जाए इस चैप्टर में से, जो आपको सेक्शन बी में देखने मिल सकता है, क्या क्या है। इंपॉर्टेंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, अब ये हो सकता है ये 1 मार्क में भी हो। व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट, 1 मार्क में पूछ ले। डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ऑटोनॉमस, चाहे 2 मार्क में पूछे, या मान लो व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया वगैरह कुछ पूछ ले आपसे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपसे पूछ ले, 1 मार्क में पूछे या 2 मार्क में डिफरेंस के फॉर्म में पूछे, कुछ पूछ सकता है। ठीक है, एंड 1 मार्क में ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, क्यों अटक रहा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सर कंपोनेंट्स के लिए खाली C प्लस आई, नो 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 नो, द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल बी C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M, एंड देन Keynesian मॉडल का बताते हुए कि इन अ सिंप्लीफाइड Keynesian मॉडल वी हैव अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल एंड अ टू सेक्टर इन विच वी हैव C प्लस आई, नीचे कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। ठीक है, चारों कंपोनेंट आएंगे एंड देन Keynesian का 2 आएगा। इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़े, बस इतना हो गया। ये आपका थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। रिमेंबर दैट थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट अलोन गिव्स यू 8 मार्क्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, जब आप लास्ट डे रिवीजन भी करोगे ना, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिवाइज। 16 नंबर घर पे सीधा सीधी। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, मनी। What becomes important from money this year is contingent function of money. Very probable, very highly probable. If not contingent, then my second best priority would go towards secondary function. Yeah, if not contingent, then it would go towards secondary function. But then contingent function is very important for this year's examination. Third is आपका ऑफ कोर्स डिफरेंस बिटवीन, ये खाली सैंपल पेपर में ही आया है, अभी तक बोर्ड पेपर में नहीं आया, तो इस साल दे देना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, सीएफक्यू में पूछ लिया है, स्पेसिमेन में पूछ लिया है, बोर्ड में नहीं पूछा है अभी तक, जब से ऐड हुआ है इन्फ्लेशन का टॉपिक मनी के साथ। तो दिस ईयर इट गोज वेरी प्रोबेबल, काउंसिल शुड बी फोकसिंग अपॉन दिस एरिया। ठीक है, and of course undoubtedly measures of money supply. अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, हम बार बार बता दे रहे हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई डायरेक्ट नहीं आएगा। M1, M2, M3 एंड M4 एंड M0 इसको केस के फॉर्मेट में ही देगा, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन ही देगा। इसको ऐड कर ले, इसको विड्रॉ कर ले तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस टाइप का आएगा। ठीक है, sir, for functions of money, the secondary functions are derived from primary. So if we get an MCQ, then which one would we prefer? Sir, wage push inflation पिछला साल पूछा था, डिमांड पुल इंपॉर्टेंट बन गया फिर तो इस साल के लिए, या डिफरेंस में इंपॉर्टेंट बन गया इस साल के लिए? डिफरेंस तो नहीं पूछा था ना, आइडेंटिफिकेशन पूछा था, सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो गया।
हाँ, कोई वीडियो में प्रिकॉशन लिमिटेशन सिखाया है? जी हाँ, सिखाया है नेशनल इनकम का, डिटेल वाला वीडियो जाके देखिए। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, बैंकिंग। 100% लाइक ऑफ कोर्स। अब कौन सा जाएगा नहीं पता, सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स अच्छे से करके जाइएगा, विच इज एसोसिएटेड विथ योर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द बैंक। डू नॉट डेयर स्किप आउट वन, एक भी मत छोड़ के जाइएगा। सर आपके सैंपल पेपर में एक पिक्चर बेस्ड था, एंड फूड मार्केट विच फॉर्म, मोनोपोलिस्टिक बेटा, उसका मोनोपोलिस्टिक था। सर डिफरेंस बिटवीन सीआरआर, एसएलआर, एक्सेस रिजर्व, एसएलआर, मिनिमम रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, क्या क्या पूछ रहा है बेटा तुम? Can you explain? I already have explained in my that thing, detailed explanation. Even revision भी जब कर रहे थे तब उसमें भी कर लिया है explain, ठीक है? So don't repeatedly ask the same thing. Next one, functions of RBI goes very important this year. Functions of Reserve Bank of India goes very important this year. Repo and reverse repo rate goes very important this year. Repo and reverse repo rate goes very important this year, and difference between CRR and SLR goes very important this year. ठीक है? These are some of my areas which I would test upon if I were to make paper. Personal income is equal to private income minus corporate tax minus dividend minus. Yes, that is 100%. That is the same formula. सर ISC 25 का ही लेवल रहेगा कि 26 का? थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा छुट्टी दिया था, और एल सेम ही रहेगा। लेट्स सी। चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी पता है मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? एकदम अपर केस में मैं लिखूंगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से एकदम पढ़ेगा जब रीड करेगा। न्यूज़पेपर का कटआउट को ध्यान से पढ़ेगा बीओपी को लेके, ठीक है? बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर रीडिंग बीओपी, बिकॉज questions on the basis of your own understanding and interpretation will be tested upon. We cannot predict and say that यही particular चीज आएगा बीओपी में। ध्यान से पढ़ेगा। I am issuing a statutory warning again and again. Now, categorization is important. Categorization into account. कौन सा अकाउंट? चाहे करंट हो गया वर्सेस कैपिटल हो गया, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है काउंसिल अगर बहुत दयालु हो तो आपको आइटम दे देगा, बोलेगा ये करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है? करंट में आएगा या कैपिटल में आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवर्स BOP is important this year. डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ इजी देना होगा काउंसिल को तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, difference between fixed and flexible exchange rate system is important. Flexible exchange rate system as automatic adjustment is important. Flexible exchange rate system as automatic adjustment. Clean versus dirty floating in the short question is important. Clean versus, ये भी पता है, इसको भी केस स्टडी बना सकता है वो लोग।
कि पहले ऐसा ऐसा हुआ मार्केट में एंड देन आरबीआई डिसाइडेड टू अकोमोडेट. So which kind of floating is highlighted? Which kind? Limits of credit creation beta aa gaya compartment paper mein. Limits of credit creation is already there in the compartment paper. I don't think so they should repeat. They will not repeat. And credit creation भी नहीं आएगा. Credit creation 2025 में पूछ लिया, जिसमें बच्चा लोग पूरा गोंडोगोल करके आया था. जोरदार गोंडोगोल हुआ था. बच्चा लोग ने रट्टा मार लिया था 20% वाला लीगल रिजर्व रेशियो को. काउंसिल ने खुद दे दिया था 25% पे. ध्यान नहीं गया, सब 20% पे लेके लिख के आ गया. आंसर बना के हाफ, like out of 4 only 2 was awarded or 1.5 was awarded to every child. Sir, what is rectification of BOP? Rectification of adverse BOP. Beta, adverse means deficit in BOP. How to remove disequilibrium. Deficit BOP को हटाते कैसे, ठीक है. बुक में लीगल रिजर्व रेशियो 20% था. काउंसिल ने 25% पे दे के अपना खुद दे के टेस्ट किया था. बच्चा लोग 20% लिख के आ गया था, रॉन्ग हो गया था. डोंट मेक दैट मिस्टेक. एंड ऑफ कोर्स एक और डिफरेंस इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग. ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो कर लेना, ठीक है. ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो काफी टाइम से नहीं आया, पूछ सकता है. चले आगे बढ़े. नेक्स्ट वन, बजट. I mean government budget. Government budget. Of course, for this year, fiscal and revenue deficit with क्या जाएगा, implication. Very important. HOTS बनाना हो ना बेटा, तो HOTS कैसे बनाएगा? Can there be a fiscal deficit without having a revenue deficit? Can there be fiscal deficit without a revenue deficit? Yes or no? Give a reason to support your answer. Yes, there can be. There can be. What no? Yes, it can be. There can be a fiscal deficit. Even though if there is a revenue surplus, but if the capital expenditure of the government, overall capex, capital expenditure surpasses the overall revenue surplus, then there will be. ठीक है, हो सकता है. Can there be a revenue deficit but a fiscal surplus? Yes, there can be. हो सकता है, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, गॉट इट. What is zero primary deficit? Zero primary deficit beta implies that there is zero borrowing on the part of government. There is no interest burden on the part of government. That is zero primary deficit. What is primary deficit? Difference between fiscal deficit and interest payment. So अगर zero आ गया, PD is equal to FD minus interest. And अगर ये zero आ गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि पीडी इधर आ सकता है और इंटरेस्ट इधर जा सकता है. पीडी कैन कम हियर, इंटरेस्ट कैन गो देयर. इट मींस दैट इंटरेस्ट इज जीरो. ठीक है, इंटरेस्ट बर्डन इज जीरो. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े. हाँ, क्या दे रहे थे? नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 2 मार्क में कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है. या तो ये करेगा, नहीं तो एट द मैक्स क्या कर सकता है, कैटेगराइजेशन दे सकता है. कैटेगराइजेशन इनटू रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब आपको आइटम्स दे देगा, बोलेगा दिस फॉल्स अंडर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
capital receipt, capital expenditure. Sir, do people get 100 in economics? 100% they do get. Why not? एकदम आता ही आता है, बट थोड़ा साल भर पढ़ाई करना पड़ता है उसके लिए. ठीक है, चले आगे बढ़े. हो गया. सर अबव द लाइन बिलो द लाइन इंपॉर्टेंट है. अबव द लाइन बिलो द लाइन मतलब हो गया आपका ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो. बता तो दिया, आ सकता है. अरे नहीं, सॉरी, अबव द लाइन बिलो द लाइन मतलब करंट और कैपिटल अकाउंट हो गया, यानी उसका कंपोनेंट्स पूछ सकता है. पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, like if I were to set your paper, I would test upon these areas, considering the past questions that had come in the examination, the trend which the council had been following. अगर council मेरे को बोलता है पेपर बनाने के लिए, तो हम इस टाइप से बनाता या इन सारे एरियाज को टच करता इस साल के पेपर में. चलो नेक्स्ट इज आपका फिस्कल पॉलिसी. डेट रिडेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे पॉइंट्स एक भी नहीं छोड़ के जाएगा. डेट रिडेम्पशन मेथड एक भी पॉइंट नहीं छोड़ के जाएगा, समझा? एक भी नहीं. व्हेन आई से एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं. रिफंडिंग हो, रेप्यूडिएशन हो, टर्मिनल एनुइटीज हो, सिंकिंग फंड हो, सरप्लस बजट हो, सरप्लस बीओपी हो, कैपिटल लेवी हो, एक डेट कन्वर्जन हो, एक भी नहीं छोड़ के जाएगा. सारा का सारा करके जाएगा. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेना. डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कर लेना. डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस. नहीं तो ये क्या करेगा पता है, ये आपको केस दे देगा, केस बेस दे देगा. बोलेगा कि इसके ऊपर लगाया था बट इसने इसके ऊपर पास ऑन कर दिया, या ये इसके ऊपर नहीं पास ऑन कर पाया, उसके हिसाब से आप बताइए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना आप कर लेना. हो जाएगा. आर्यन इज अ प्रोड्यूसर, आर्यन के ऊपर टैक्स लगाया, देन आर्यन पास्ड इट ऑन टू द कंज्यूमर. व्हाट काइंड ऑफ टैक्स दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन आर्यन? इनडायरेक्ट टैक्स. हो जाएगा ना, कर लेगा ना. चले आगे बढ़े. नाउ कमिंग टू, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला आया इस बार, यानी वो वाला पार्ट नहीं है, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट बनता है? अगर दिया तो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए इस साल. डेट रिडेम्पशन देके खत्म कर देना चाहिए इस चैप्टर से. बट अगर दे दिया तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट बना इस साल के लिए. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट बना, क्योंकि ऐसे भी पिछला साल बहुत रिसेशन गो थ्रू किया इकोनॉमी ओवरऑल, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी, नॉट इंडियन इकोनॉमी बट वर्ल्ड इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड तीसरा इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन इनकम या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप बोलो. ठीक है, ये तीन एरियाज इंपॉर्टेंट बनते हैं. Is that clear? Economic stability is important. Government expenditure as an anti-cyclical instrument. Investment में क्या करेगा गवर्नमेंट? इकोनॉमिक ओवरहेड, सोशल ओवरहेड में बहुत ज्यादा खर्चा करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने के लिए. एंड आपका इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में क्या करेगा? सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लो इनकम ग्रुप को, ताकि उनको बैकअप किया जा सके. इज दैट क्लियर? ये तीन एरिया इंपॉर्टेंट बनता है. बट देन मेरा प्राइमरी रहेगा कि डेट रिडेम्पशन देना चाहिए इस साल. ये प्राइमरी फोकस होना चाहिए उनका. सर प्री बोर्ड से रिलेटेड आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है. अगर आपके स्कूल टीचर्स अच्छे हैं, वो लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं, अच्छा पेपर बनाते हैं, तो क्यों नहीं आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है. चलिए लास्ट टॉपिक. हम बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस टॉपिक में कि मेरा बच्चा लोग को एकदम टॉर्चर ना करे. काउंसिल पेपर देके एकदम चुपचाप, न्यूमेरिकल तो आएगा ही लेकिन चुपचाप
डिफरेंस बिटवीन 4 नंबर में रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी देके, जो कि इंपॉर्टेंट बनता भी है इस साल, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड विच इज अ बेटर इंडिकेटर देके हटा दे। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई ट्रॉमा ना दे। 4 नंबर का चुपचाप ये क्वेश्चन दे दे। अगर ये ना देना हो तो चलो ज्यादा से ज्यादा ये दे दे कि बेटर इंडिकेटर का ही क्वेश्चन दे दे, बट उसमें पूछ ले रियल जीडीपी बेटर है और रियल पर कैपिटा इनकम बेटर है। वी ऑल नो दैट रियल पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर। ठीक है, रियल जीडीपी या रियल पर कैपिटा इनकम कौन सा बेटर है? वी नो दैट रियल पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर। नहीं, सर्कुलर फ्लो इस साल नहीं आएगा। सर्कुलर फ्लो एक साल दे दिया, लास्ट ईयर दे दिया। 4 सेक्टर मॉडल इज ऑलरेडी गिवन, सो नॉट एक्सपेक्टिंग अ सर्कुलर फ्लो दिस ईयर। ठीक है, हाँ तो मीनिंग पूछ लेगा। अरे 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 अरे, मीनिंग पूछ लेगा इसका। What do you mean by real GDP and what do you mean by real per capita income, and which is a better indicator with a reason? So 1 mark for your meaning and 2 mark for your 2 reason. सर इग्नोर मत करो, बोर्ड से सवाल है। फॉरेन एक्सचेंज आपका वीडियो में देखा था, बहुत अच्छा समझाया था आपने, पर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। प्लीज सर इफ यू कैन डू द नीडफुल, व्हाट कैन आई डू बेटा, जस्ट डू इट वंस अगेन। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर, रियल 100% रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर because it neutralizes the effect of price change. Sir, real per capita income and per cap, no, real per capita income and per capita income are not same. Per capita income में we take the current GDP, but real per capita income में we take the nominal real GDP and then divided by the population. So again the inflation का effect is neutralized in the real per capita income as well. ठीक है, is that clear? चलिए, एंड सॉरी टू से गाइस बट ये इंपॉर्टेंट है और कर लेना, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। एंड व्हेन आई से डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? प्राइवेट कॉमा पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंपॉर्टेंट हो गया इस साल के लिए, करना पड़ेगा, नहीं छोड़ के जा सकते आप इसको। ठीक है sir, feeling like I'm forgetting everything. No, it's just your brain trying to trick you. Private, personal, and personal disposable income. This becomes important for this year's board examination. नहीं छोड़ सकते आप, करना पड़ेगा इसको। इसके बाद या तो भगवान से प्रार्थना रहेगा मेरा, कुछ नहीं, सिंपल सादा इंक्लूजन एक्सक्लूजन दे दो भाई। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. What is inclusion exclusion? Whether this will be included in the national income or excluded. ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन दे दे। आई डोंट नो पेपर कैसा आएगा बेटा, आने दो फिर देख के बताएंगे कैसा है। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। सर सब में करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, व्हाट कैन आई डू बेटा, यार मैं क्या करूँ? चल ले चल मेरे को एग्जाम देने के लिए, हम दे आते हैं। व्हाट अबाउट डिफिकल्टी आएगा क्या इनकम मेथड वाला वो सब? नहीं नहीं नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा। Yeah, like unilateral payment is not included, sale and purchase of second hand item is not included, brokerage commission is included, इसने ये खर्चा किया तो इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, वगैरह वगैरह ये सब आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का अगर और मैं बात करूं, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली ऑपरेटिंग सरप्लस वाला। What are the components of operating surplus? Very important for this year. इसके अलावा एक भी मेथड का स्टेप्स कॉमा प्रिकॉशंस एंड डिफिकल्टी को मत छोड़ के जाना, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेप्स प्रिकॉशंस एंड डिफिकल्टी को मत छोड़ के जाना, पूछा जा सकता है।
शॉर्ट आंसर में अगर कुछ पूछना हो, 2-2 मार्क में अगर देना होगा सेक्शन बी में, तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। सर्कुलर फ्लो नहीं देके, पता है ये दे देगा आपको, रियल फ्लो मनी फ्लो दे देगा अगर देना हो। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो पूछा जा सकता है। एंड चौथा, डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। ठीक है, अगर डिफरेंस ना भी दे तो फिर क्या पूछ लेगा इसका पता है, लीकेज इंजेक्शन का कंपोनेंट्स बता दो। आई होप आपको कंपोनेंट्स तो ऑलरेडी पता ही है। लीकेज का इट इज सेविंग टैक्स एंड इंपोर्ट इंजेक्शन का इट इज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। ठीक है भैया, प्लीज एक्सप्लेन वंस द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, बीओपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वंश वाधवा। एक्सेस डिमांड में क्या होता है बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सो उसका मेजरमेंट क्या होगा बीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बताइए क्या करना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड को अगर कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड यू डू एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। एक्सपोर्ट्स आर टू बी कट डाउन, एक्सपोर्ट्स आर टू बी कट डाउन, ताकि एग्रीगेट डिमांड नीचे आ सके। ठीक है, एंड डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा एंड इंपोर्ट्स को घटाएगा, उल्टा हो जाएगा। सर कल का दिन कैसे यूटिलाइज करें, पूरी पढ़ाई करके, लाइक ए टू जेड आपका एटलीस्ट 2 बार रन थ्रू हो जाना चाहिए। हाँ, 2 बार, भले 8 घंटा 9 घंटा लगे, 2 बार रन थ्रू करो। इवनिंग के टाइम पे बैठ के खाली जिस जिस एरिया में गलती हुआ था या भूल गए थे उसको रिकॉल करो। नेक्स्ट डे सुबह उठ के, जब द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन है, उस दिन थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है तो। दैट शुड योर रोड मैप बी। ठीक है, बस, एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम। बस इससे ज्यादा मेरे हिसाब से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल तो आएगा ही 4 मार्क का। सर्कुलर फ्लो हैज ऑलरेडी कम लास्ट ईयर, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सर्कुलर फ्लो दिस ईयर। Fourth sector had been tested upon 2025. हाँ, पूछ रही है, क्या पूछना है। हाँ बेटा, सर्कुलर फ्लो आया था लास्ट ईयर, 4 सेक्टर मॉडल दिया था, ठीक से चेक करो। सर थैंक यू सो मच, आप तब से खड़े हो पढ़ाने में, थैंक यू, इट्स मोस्ट वेलकम डियर। सर 2 बार रिवीजन पॉसिबल है एक दिन में, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स हम 3 से 4 बार कर लिया था। अब डिपेंड्स आप रिवीजन कैसे करते हैं। अब रिवीजन भी डिटेल में करेगा तो फिर कैसे होगा बेटा। रिवीजन के लिए कीवर्ड कॉपी जो बनाया होगा, सिर्फ कीवर्ड को नजर घुमाना है, डायग्राम्स को देखना है, दैट इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। रिवीजन इज नॉट लाइक यू रीड ईच एंड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज रिवीजन। ठीक है, मे बी योर पर्सपेक्टिव ऑफ रिवीजन एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ रिवीजन इज वेरी डिफरेंट। अरे हाँ भाई, 4 सेक्टर के कुछ तो आया था, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कुछ आया है, हमको इतना याद है। बोलो तो हम चेक कर लेते एक बार, रुको खोल रहे हैं। ISC Economics 2025 क्वेश्चन पेपर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जाके देखूं क्या आया था। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एरर, डिस्कस 2 रीजन फॉर नॉट कंसिडरिंग जीडीपी एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। नहीं आया क्या, कहीं सेक्शन बी में आया है, कहीं तो आया है, हमको याद है एकदम अच्छे से। जस्ट 1 सेकेंड। Categorize the main occupation, लक्ष्मण इंसान, draw diagram simultaneous, नहीं नहीं, इब्राहिम,
return to factor, return to a scale, situation, main occupation, monopolistic, 1000 Indian rupee. Gruha Lakshmi, instead Valentine week. So don't tell me कि मेरे को डेजा वो हो रहा था और नहीं आया है. सर्कुलर फ्लो नहीं आया, देन 4 सेक्टर कर लीजिएगा, ठीक है. बिकॉज वंस यू डू 4 सेक्टर ना, ऑटोमेटिकली ऑल योर सेक्टर्स आर कवर्ड अप इन दैट, ठीक है. जैसे ही आप 4 सेक्टर मॉडल करोगे आपका ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है, ठीक है. डोंट लीव आउट 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल को प्रिपेयर कर लीजिएगा. इज दैट क्लियर? Sir, you the real teacher. Thank you for your efforts. So you're most welcome, dear. Thank you so much for your compliment. Is my favorite subject because thank you so much, Krishna Yadav. सर आपके ये क्वेश्चंस कल रिवीजन में करेंगे, हो जाएगा आई थिंक. या उल्टा ये सारे क्वेश्चन को पता है कि कल पूरा एक बार प्रॉपर मैराथन ले लो, कल इवनिंग में ये सारा जो क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से करने बैठ जाओ, सुबह भी एक बार इन क्वेश्चन को नजर घुमा लेना, दैट्स ऑल, ठीक है. एंड यू विल नॉट स्टडी पोस्ट 11 ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. 11 सवा 11 के बाद आप पढ़ाई नहीं करेंगे इफ यू वांट टू स्कोर 100 इन इको. सर पेपर कैसा आएगा? पेपर थोड़ा सा भारी आएगा, दैट्स फॉर श्योर. इतना दिन का छुट्टी दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा. सर 4 सेक्टर 2024 में आया था. इज इट सो? तो मेरे को शायद वही वाला याद है, 2024 में आया होगा. सो दैट मेक्स 3 सेक्टर एंड 2 सेक्टर इंपॉर्टेंट. आप 4 सेक्टर ही प्रिपेयर करो क्योंकि 4 सेक्टर करते ही तो सारा उसमें इंटीग्रेट हो गया ना. फिर आपको जो नई रिक्वायरमेंट है उसको एलिमिनेट कर देना. द मोमेंट यू आर स्टडिंग 4 सेक्टर, अगर 3 सेक्टर दिया तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उड़ा दो, 2 सेक्टर दिया तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट दोनों उड़ा दो, 2 सेक्टर विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट दिया तो बीच का विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट उड़ा देना. सो 4 सेक्टर में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग गेट्स इंटीग्रेटेड. सो एक ही प्रिपेयर करो, ठीक है. थैंक यू सो मच जय. आई थिंक अकाउंट्स लास्ट ईयर, इस बार इको होगा. अरे इको लास्ट ईयर भी थोड़ा सा टफ ही था, बच्चा लोग बहुत रोना धोना मचाया था. ऑल्दो आई डिड नॉट फाइंड और माय किड्स डिड नॉट फाइंड इको पेपर टू बी टफ. इट टोटली डिपेंड्स आप किससे पढ़ा है. आप सरफेस लेवल पे इको पढ़ाई किया है तो आपको सरफेस लेवल वाला मार्क्स आएगा. आपने इन डेप्थ पढ़ाई किया है तो आपको इन डेप्थ मार्क्स आएगा. लेट योर जूनियर्स नो अबाउट दिस. लेट नॉट देम गैम्बल, लेट देम नॉट गैम्बल विद देयर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कॉमर्स, ठीक है. सर अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करूंगा? तो रो लेना वहां पे बैठ के एग्जाम हॉल में. तुम पहले रो लेना, बाद में जब आके क्वेश्चन पेपर हम देखेगा हम भी बाद में रो लेगा. क्या करेगा और बोलो. हम आपको एकदम नहीं बोल रहे कि यही आएगा, आई एम द लीकर ऑफ आईएससी, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल रहे. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आपको लगता है कि आर्यन सर बोले हैं, हो सकता है भाई बंदे में दम होगा तभी कुछ बोल रहा है सोच समझ के, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. सर एग्जाम के बाद थोड़ा करियर गाइडेंस देंगे. आप अपना करियर को सीरियसली लेंगे जीवन में तो जरूर देंगे. मेरे गाइडेंस देने का मैं अपना 1 घंटा एनर्जी वेस्ट कर दूंगा और आप सीरियस नहीं लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा. सीरियस लेंगे तो दूंगा. रिलेटेड आ सकता है ना, रिलेटेड सब कुछ आएगा. देखो हो सकता है यही क्वेश्चन होगा, उसको प्रेजेंट ऐसे करेगा केस के फॉर्मेट में कि आपसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो हमको गाली नहीं देगा. जब हम आंसर की आपको बताएगा उस टाइम पे होगा यही सारा चीज, बट उसको प्रेजेंट ऐसे किया होगा कि अरे यार शिट मैंने तो गलत लिख दिया. तो आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड और एट फॉल्ट, ठीक है. सर 4 सेक्टर चेक अगेन, हम चेक किया 2025 में नहीं है, शायद 24 में ही है. सर सीयूईटी का कुछ करवा दोगे? आपने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपको सीयूईटी के लिए और मेरा भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ट्रस्ट मी, यू डोंट इवन नीड मी. यू विल सेल्फ स्टडी ऑन योर ओन एंड यू आर गुड टू गो. सर आपके नोट से पढ़ लिया. इज दैट इनफ? मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ. आंसर्स कैसे लिखना है कल मैं आपको आके दिखा दूंगा, ठीक है. आप जाओ थोड़ा सा रिलैक्स करो, खाओ पियो
एंड थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, गो ऑफ टू स्लीप, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ने बैठ जाना। ऑल्दो मेरा एकदम आई डोंट हैव माय हार्ट टू यू नो make you all feel underconfident tomorrow by solving MCQs and all. You want to practice on your own, do it. I don't want to do it. I don't want कि आपका गलत होते जाए and then you feel demotivated. जो हुआ है, जितना हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक है। मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, डोंट वरी, जस्ट सॉल्व ऑन योर ओन। सर एक ग्राफ का वीडियो बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना लोग ग्राफ के वीडियोस, जाइए आप देख लीजिए ग्राफ का वीडियोस। सर थ्योरी कैसे याद करें? कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है भाई साहब, मेरा सर चक्कर दे रहा है एकदम ये सब देख देख के। अक्षत थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम अक्षत। एकदम रोना छूट जाए, हम रो पड़ेंगे देख के, सर कैसे पढ़े, एक दिन में कैसे करके लाए, कैसे होगा कैसे होगा। भाई कैसा बच्चा लोग है तुम लोग, 6 महीना पहले तो पढ़ लेता, कम से कम 4 महीना पहले, 2 महीना पहले, अरे 1 महीना पहले ही पढ़ लेता, पढ़ाई शुरू तो कर देता। Sir, thank you so much. Chalo, on the day of your examination, of course, I don't know whether I'll be able to come live or not. So I'll try to because I'll be on my way to Calcutta. Let's see. आंसर की भी हो सकता है मेरे को स्टेशन में बैठ के बनाना पड़े, सो आपको स्मार्ट बोर्ड वाला आंसर की नहीं मिलेगा, मैं बस ऐसे फोन में देख देख के आपको ऑप्शन ए बी सी डी बताते जाऊंगा, आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। सर आपके कितने परसेंट आए थे 12th में? 86%, दैट्स ऑल। Still, I am a wonderful teacher. Always remember, a good student cannot be a good teacher, and a good teacher will never be a good student. Only a good teacher who was not a good student understands the importance of being a good teacher, what he or she lacked in a teacher, and when that backbencher becomes a teacher, that teacher is a phenomenal teacher in life. I was a very average student, but still I was very dedicated. I never got a teacher the kind of teacher I am. I wanted that kind of teacher. सारे टीचर हम लोगों को रट्टा ही मरवाते थे, मुझे नहीं चाहिए था ऐसे टीचर, मुझे चाहिए था कोई समझाए बैठे, कोई समझाता ही नहीं था, बोल के जितना मुझे समझ में आया उतने हिसाब से मैंने मार्क्स उठा लिए थे, ठीक है। बट देन मेरे से पढ़ के जब बच्चे 100 लेके जाते हैं, 99 लेके जाते हैं, आई फील फुलफिल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग कि चलो आई एम डूइंग एटलीस्ट गुड इन लाइफ। सर बेंगली बोलिए, কি বলবো বাংলাতে, এবার যাও একটু রেস্ট করো, একটু খাবার দাবার করো, তারপরে কালকে দেখা হবে। कितनी बार रिवीजन करें? दो बार एटलीस्ट, फुल रिवीजन 2 times. रिवीजन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड इन सिलेबल। रिवीजन मीन्स के की वर्ड्स को गो थ्रू करना है, डायग्राम्स को गो थ्रू करना है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। कल एक बार आप फर्स्ट हाफ में आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर आपको लगता है आपको करना है तो आप मेरा जो लाइव रिवीजन था ना हर एक चीज का, बस 2x स्पीड कान में लगा के सुन लो, ऑडियो सुन लो, आई थिंक आपको लर्न हो जाएगा। मैंने सारे कीवर्ड इतना बार यूज किया आपके दिमाग में एनग्रेन्ड हो जाएगा। दैट कुड ऑल्सो बी योर टाइप ऑफ रिविजन। सो फर्स्ट हाफ मे बी मॉर्निंग 8 till 2 till your lunch time, you are doing your own revision, going through reading things on your own, and maybe after lunch 4 बजे से मस्त ईयरफोन प्लग करो, 2x स्पीड में मेरा सारा लाइफ को सुनो, आई थिंक आपका 3-4 घंटे में हो जाएगा, आपका सेकेंड रिवीजन भी आ जाएगा दिमाग में, ठीक है। दैट कुड बी डन। आई लव द वे यू आर टेकिंग आवर डाउट्स। व्हाट अबाउट द ग्राफ? ग्राफ बेटा रात को सोने से पहले बस 1 घंटा बैठ के हर एक चैप्टर का y वेरिएबल एंड x वेरिएबल में क्या लिखा जाता है उसको बना लेना या उसको गो थ्रू कर लेना। लाइक डिमांड में प्राइस क्वांटिटी, इनकम क्वांटिटी, प्राइस ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ y, कंज्यूमर में आपका टोटल यूटिलिटी यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट, फिर आपका मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी फॉर कार्डिनल अप्रोच, गुड y, गुड x, बजट लाइन में गुड y, गुड x, ऐसे करके सारा चैप्टर का y वेरिएबल x वेरिएबल को रिकॉल कर लेना। लॉ ऑफ रिटर्न में याद रखिएगा, टोटल एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट, लेबर की जगह आउटपुट मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। कॉस्ट में कॉस्ट आउटपुट, रेवेन्यू में रेवेन्यू आउटपुट, डिटर्मिनेशन में प्राइस क्वांटिटी, चैप्टर 11 में प्राइस क्वांटिटी है, टीआरटीसी में टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, आउटपुट, वैसे करके खुद को रिकॉल करा लेना, ठीक है।
Sir, I will remember you always. Thank you so much, Akshat. बदले में है दम, इको की चिंता खत्म. I really like the rhyme. सर बस इस बार का एग्जाम कैसा आएगा? भाई अब हम दोबारा नहीं रिपीट करेगा, नहीं तो हम स्क्रीन से निकल के मारेगा तुमको. अब पूछेगा कैसा आएगा, तो जैसा आएगा देना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. बाबू अच्छा आएगा, डोंट वरी, अपने आप पे भरोसा रखिए. हम ये सब नहीं करने वाला है. पेपर स्टैंडर्ड आएगा, अच्छा आएगा, मेहनत किया है, फल मिलेगा. ठीक है. सर आप खाना खा लो, हमें तो पढ़ते पढ़ते खा लिया. सर यू मेड कॉन्सेप्ट क्लियर, थैंक यू सो मच. सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए बाबा अब हम जा रहे हैं सोने. बाय बाय. ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरीथिंग इज गिवन. आई विल सी यू ऑल टुमारो. टेक केयर. दिस इज आर्यन ठक्कर साइनिंग ऑफ. इनफ फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो एंड टेक केयर. शुभ रात्रि, गुड नाइट. कल देखते हैं, हो सकेगा तो आते हैं दोबारा से एक बार. ठीक है. बाय सर. बाय बाय. बाय गाइस. बाय. I am not dying. If you want to watch me once again, you can always come and check out my videos or my live session as an ex-student. So, as much as your heart hurts, so does mine to leave you all behind and say goodbye. But बोलते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी. That is how life is. शायद किसी मोड़ पे हम लोग दोबारा जरूर से मिलेंगे. maybe not as a teacher student, then maybe as boss and employee. हो सकता है आप मेरे लिए शायद फ्यूचर में काम कर रहे हो, या हम लोग किसी ऐसे ही रास्ते में मार्केट में घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा जाए. एंड मे बी वील गिव आवर बेस्ट स्माइल एंड warmth to each other. This is how life is, and this is what makes life beautiful, simple and beautiful. So good night, शुभ रात्रि, take care. बहुत जल्दी से कल मिलते हैं. मेरा मन तो मानेगा नहीं, तो कल दोबारा से आएंगे. टाटा. लव यू गाइस. टेक केयर. लॉट्स ऑफ गॉड ब्लेस. Manifesting 100 on 100 for you guys. We'll see you all tomorrow. Tata. Take care.